आज के स्ट्रीम में स्वागत है। मेरा नाम है केबल। आज वापस स्टारफील्ड का जारी रखेंगे। ये कोई एक बंदी था जिसे हमें ढूंढना है। उसके बाद काफ़ी सारे साइड क्वेस्ट भी है जो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ जो मैंने शुरू किए थे। जो क्वेस्ट लिए थे पर कभी किए नहीं, तो उसका आज वो सारे भी करूँगा। उसके बाद शाम को अभी करूं कि बाद में करूं, मैं सोच रहा हूँ फ्री स्टार रेंजर्स का जो क्वेस्ट लाइन है वो कब करूं, वो सोच रहा हूँ मैं। हम्म, चलो अभी के लिए वो बाद में देखेंगे, पहले स्टार्ट रिकॉर्डिंग दबाता हूँ और फिर शुरू करते हैं। ओके, फाइंड आर्टिफैक्ट ऑन यहाँ पे, और यहाँ पे एंड्रेहा 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 और यहाँ पे मिल जाएगी। अरे मुझे लगता मैंने किया इसे If all miners are like you, I'm gonna watch my step around here. वो भी है। इसका कितना हुआ है मेरा? 38%। मुझे लग रहा है ये वाला काफी मिलेगा रास्ते में। कैन ओ डैम, काफी पास है इसका एंड। एंड नहीं, इसका क्या बोलते हैं इससे, दिमाग में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। क्वेस्ट पॉइंट वही बोलते हैं सर। क्वेस्ट पॉइंट, क्वेस्ट मार्कर। मैं सोचा था इसे क्या बोलते हैं। डीप केव। ओह ओके, Might be able to break out those mining skills in a cave like this. Show me what you got. Don't come any closer. Identify yourself. are you okay? I am fine. He was clumsy. Made far too much noise. Easy to deal with. You have not answered my question. Who are you? You are from Constellation. Vladimir said someone might be coming. Well, I guess making sure you were all right was a bit of an overreaction, judging by the dead body and all. You are the newest member, yes? Do they often send you to check up on other, more senior members? क्या इस बंदी ने सही में उससे मार दिया क्योंकि वो आवाज कर रहा था बहुत ज्यादा, सिर्फ वही रीजन के लिए? हाँ, इसको क्या बोलूं? लुक्स लाइक मे बी दे हैड गुड रीजन। Perhaps. I suspect Vladimir worried you might find me on the ground, instead of this one. We waste time. We should complete our mission and then we can talk. मैं जानना चाहता हूँ वो एक्चुअल में कोई एक मिनट, क्या है ये? वारुण जेलॉट, ठीक है। Always worth checking. Never know what you might find in their pockets. यस, ये जेलेट है। ये इसके साथ थे नहीं, दो हैं क्योंकि एक नहीं। शिट, ओह मार दे। अलविदा। Once again, we are triumphant. ओपन 6000, बुरा नहीं, और डैमेज भी बुरा नहीं है असल में। इनमें रुकना, वेपन्स, एस्टा टेमर, मीन उतना बुरा नहीं है। रैटलर, इक्विनॉक्स मेरे पास ऑलरेडी ज़्यादा अच्छा है, ये मुझे अच्छे से याद है।
50 रेगुलेटर। इतना अलग अलग टाइप के हथियार है यार सही में इसमें। ओह ओके, ये 11 है, मैं सोच रहा था ये 7 है। इसकी ज़रूरत नहीं है। रैपिड और रायन भी बेचने का है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ज़्यादा अच्छा रायन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 56 इसको मैं डाल देता हूँ। ये कौन सा है, पैसिफायर ना, यहाँ पे डाल देता हूँ इसे। हाँ नहीं, माफ करना, ये पैसिफायर टेमा। इसका थोड़ा इस्तेमाल करके देखता हूँ। उससे पहले ट्रीट्स इन्फेक्शंस। ये क्या है देखे तो, रोबोट कंट्रोल। पहले तो ये प्रोटेक्ट करंट यूजर, ठीक है। एक्टिवेट यूनिट्स, और अब वो मदद करेंगे। ओह ऐसे वाला है, नाइस। $2408 इस बंदे के पास। कैलकुलेटेड ना, नहीं 2000 के ऊपर ही सर, मैंने डिसाइड किया। और अभी भी हिडन ही हूँ तो यहाँ पे हैं लोग, मुझे लग रहा है। यप डेफिनेटली है, पर इतना लॉन्ग रेंज है। एक मिनट, कहाँ पे है ये रहा। व्हाट द, ये लॉन्ग रेंज के लिए बिल्कुल नहीं है। जा एक मिनट, याद है मैंने इसका लिया हुआ है क्या? हाँ ठीक है, अब बस बैलिस्टिक वेपन से इस्तेमाल करना होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये किसकी तरफ भाग रहा है? पता नहीं किसकी तरफ भाग रहा था वो वाला रोबोट हमारा। The enemy may be attempting to evade my sensors. I am initiating a search pattern. हाँ तू वो कर, तब तक मैं यहाँ पे 2 जो है उन्हें मारता हूँ। एक शॉट। इसका अगर फायर रेंज थोड़ा और ज्यादा होता तो मजा आ जाता यार। 2000 के नीचे मैं कोई भी नहीं उठाने वाला भाई। यहाँ पे मैं सबको मारना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। सही में कैसे मिस हुआ वो? 3 मिस हुए यार मुझसे। क्या है ये? 5 हेल्थ प्लस O2 मेरे पास बहुत है वैसे वाले। $4000 रखना है। क्रेडिट्स ऑफ कोर्स रखना है। 2802 भी ऑफ कोर्स रखना है। कैलिब्रेटेड गन वैरायटी भाई, स्ट्रीम में स्वागत है। और आपका तो पूरी रात और पूरी सुबह भी क्या बोलते उस पे चले गया था, ब्लास्फेमस 2 आपका देखा सुबह, क्या बोलते हैं स्ट्रीम आपने शुरू किया था। कैसे चल रहा है वैसे ब्लास्फेमस आपका? कितने और बॉसेस मार दिए कल से? यहाँ पे और कुछ है क्या? ओ ये वापस ऊपर जाने के लिए, और कुछ नहीं।
एक Let मिनट us talk more once our mission is complete. ओके मैं इसे कुछ नहीं देख Yeah, the way you सकता handle things, not bad. Not bad. धन्यवाद If you're looking for something in particular, I might have a spare. मैंने तुझे काफ़ी चीज़ें दी हैं वैसे पर थोड़ा और चीज़ें ले ले एक मिनट Next time. मैंने इसे दिया ना सारी चीज़ें 192 वैसे क्या बोलते हैं आपने ब्लास्फेमस 1 खेला है वैरायटी भाई या ये पहला डायरेक्टली ब्लास्फेमस 2 के साथ ही शुरू कर दिया था आपने यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो ब्लास्फेमस 1 और 2 में कोई डिफरेंस है क्या या फिर बेसिकली सेम ही है बस नया एरिया नया बॉस वैसा है एक मिनट ना यहाँ पे ऊपर कुछ है क्या नहीं ओ यहाँ पे कोई है ओह क्या डैमेज है सही में इसका समझ में आता है इतना कम क्यों रखा है इसका अटैक का भाग रहा है वो न्यूराजेक मेडपैक बोडिशिया What do you mean? Every single time I make a mistake, before I can say, oops, she's there, and very politely, ever so patiently, telling me I made a mistake. You know what I mean? No, I do not. Thanks, Andreja. Now I feel better. न्यू पावर अप्स और न्यू मैकेनिक्स मैं एक्चुअली सोच रहा था ये ब्लास्फेमस 1 और 2 खेलने की आप रेकमेंड करोगे उससे खेलने के लिए आई मीन जितनी तारीफें आपके सुन रहा था मैं थोड़ा स्ट्रीम में भी और नॉर्मली मेरे हिसाब से तो आप करोगे ही पर फिर भी एक बार पूछ लेता हूँ खुद ही So, craziest bar fight? 3 spacers got the drop on me. Flipped the table. Found a good use for a butter knife. Dull, but surprisingly effective. मुझे नहीं मालूम था वो बात करना बंद कर देते हैं वो ये गायब हो जाती है एंड्रिया हाँ हॉलो नाइट खेलिए रेडी भाई स्ट्रीम नहीं किया स्ट्रीमिंग से पहले मैंने वो खेला है ओह शिट Who's next? यार कौन मार रहा है मुझे या सही में ये इसे मार दिया आई मीन वो आप सही में ब्लास्फेमस को हॉलो नाइट के लेवल पे बोल रहे हो उतना अच्छा है ओह शिट 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 हेल्थ बहुत कम है अरे यार मुझे थोड़ा नीचे जाना होगा उसे मारने के लिए ऑलमोस्ट सही है फिर Maybe trying to take a little too much on. Literally. अरे यार इसका मारने के लिए
एक मिनट, ये पूरा खुला हुआ है। सही है, ये डेफिनेटली ट्राई करूंगा फिर ब्लास्फेमस। अब वही है कि कब ट्राई करूँ, ऑलरेडी इतने ज़्यादा गेम्स है जो मैं खेलना चाहता हूँ इस साल। इतने सारे अच्छे अच्छे गेम्स रिलीज होने वाले हैं। एलन वेक 2 रिलीज होने वाला है, मैं वो खेलना चाहता हूँ। स्पाइडरमैन 2 रिलीज होने वाला है, मैं वो खेलना चाहता हूँ। उसके अलावा आर्मर कोर 6 भी मैंने शुरू नहीं किया। Bar fight? 3 spacers got the drop on me. Flipped the table. Found a good use for a butter knife. Dull, but surprisingly effective. I was on an outpost and then a predator burst in. It was all jaws and fur and spit. Everyone freaked out. 2 shots and I went back to my sandwich. Nice, but still, butter knife. Yeah. You win this round, Andreja. टिपिकल गेम है, ठीक है। देखता हूँ कभी समय मिला तो ट्राई करूंगा मैं। Sam, I apologize for bringing it up once more. Oh my gosh, this again? I do not wish to be a nuisance. I just do not understand. I don't know what to tell you, kid. It's pretty simple. I just consider it a victory, however minor, if I can use my mouth to get me out of a fight instead of into one. But why would you wish to avoid a fight? Oh, you. Don't ever change, Andreja. एंड्रेया है मेरे हिसाब से, एंड्रेजा नहीं। वैसे अभी पहले थोड़ा इससे बात Outpour करके। doesn't get too much underfoot. Share the wealth, right? जब आप बोल रहे हो ये कि ये जॉनर पसंद है, ये आपको क्या बोलते हैं, मेट्रॉइडवेनिया पसंद है, 2D गेम्स पसंद है, डार्क सोल्स टाइप्स गेम पसंद है? उसमें से किसकी बात कर रहे हो? क्योंकि ये तीनों की तीनों है। मेट्रॉइडवेनिया भी है, 2D भी है, और ये डार्क सोल्स से इंस्पायर्ड भी है। पता तो नहीं, पर ये इक्विनॉक्स को डाल देता हूँ। और कोई से रिफाइंड ग्रेंडल, इसे भी डाल दो। दे दो, जितना कम कर सकता हूँ उतना अच्छा है। इसे डालता हूँ, इसे नहीं, इसे भी डाल दो। फुल हो गया वो। Guess we're done. ओ 2D मेट्रॉइडवेनिया, ओके। चलो अब ये हो गया, अब इसे अनलॉक करते हैं। बस सेव कर दो पहले। और अब शुरू करते हैं। ये हो गया एक, ये सबसे अंदर वाला हो गया। समझ नहीं आ रहा ये कैसा है। ओके, ये हो गया। टू डी मेट्रोइडवेनिया मुझे भी सही बोलो तो काफी अच्छा लगता है। भले ही मैं उतना खेलता नहीं हूँ, पर दिखने में बस काफी अच्छा होता है मुझे वो। कोई दो वाला हो गया ये, और ये सबसे बाहर वाला ये, और ये सेकंड वाला, ये, और ये थर्ड वाला। चलो मिल गए सारे, तो शुरू करते हैं। ये और ये और ये अनलॉक हो गया। सही है। And succeed at that before we are discovered. तो फिर आपके सबसे फेवरेट 2D मेट्रोइडवेनिया गेम कौन से हैं? हॉलो नाइट तो डेफिनेटली होगा वो लिस्ट में, पूरा यकीन है मुझे। वो बहुत ही अच्छा गेम है, होना ही चाहिए वो तो। नीचे कैसे जाए?
मुझे नीचे जाना है ना। हाँ नीचे ही जाना है। ये कितने बार इसके बारे में बात करेंगे यार, क्रेजी बार फाइट के बारे में। हाँ चलो नीचे जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, स्पेस ट्रकर कॉबॉय पसंद नहीं, कॉस्ट कम है। तो भी कुछ नहीं है। ओह शिट, यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी आ चुका हूँ। कहाँ जाना है अब? तो मैसेंजर, मुझे लगता मैंने द मैसेंजर कभी देखा है, चेक करना होगा ये बाद में। मैसेंजर शायद पहली बार सुन रहा हूँ मैं। नहीं, ओ नहीं, ये नीचे जाने के लिए नहीं है। ओ वो उधर है ना नीचे जाने का। सीधे कूदना नहीं चाहता हूँ क्योंकि गारंटी मुझे एक फ्रैक्चर हो जाएगा, मैंने सीधा कूदा नीचे। तो जेट पैक होता तो कर लेता, पर मैंने अब तक वो स्किल लिया नहीं है जेट पैक का। एक मिनट, द मैसेंजर वो तो नहीं है ये सी ऑफ स्टार्स के वर्ल्ड में जो है, जो रिसेंटली रिलीज हुआ है, सी ऑफ स्टार्स ना, वो वाला तो नहीं है? कोई निंजा वाला, कोई एक डीमन लॉर्ड वापस जिंदा हो जाता, तुम्हें हीरो का एक मैसेज भेजना होता है स्टार्ट में, वो वाला तो नहीं है? मुझे लग रहा है क्योंकि वही वाला है डेफिनेटली। यस, पैरामोर, शॉटगन शेल्स ऑफ कोर्स चाहिए। Sam, I apologize for bringing it up once more. इनके पास और कोई डायलॉग नहीं है क्या? ये बार फाइट और ये वाला बस बोलते जा रहे हैं। ये नया है। सिर्फ वो कॉपर के लिए यहाँ पे आना था। ये यहाँ ऊपर जाके मैं देखना चाहता हूँ। वेल यहाँ से नहीं जा सकते उधर ऊपर। You know, it is never too early. She could make a very skilled fighter. The sooner she begins learning, the better. If she is willing, I would be pleased to work with her. I will consider that. Maybe. Thanks. ये बस लड़ाई के बारे में इसका। अगर उसके साथ रहूंगा तो मुझे कोई भी ऐसा क्या बोलते हैं ऑप्शन नहीं चुनना चाहिए जिसमें लड़ाई ना हो। सिर्फ और सिर्फ लड़ाई वाले ऑप्शंस चुनने होंगे मुझे। ओके, यहाँ से जाना है वो दो ऊपर। सैम के साथ वो चुनना है पर्सुएशन वाला जिससे लड़ाई ना करना हो, वैसे वाला चुनना है। और एंड्रेहा के साथ सिर्फ और सिर्फ लड़ाई वाले ऑप्शन चुनने हैं। लाइक वो उसके लाइक के लिए। मास 2000 के जस्ट ऊपर है वो। सही है। If you're too tired to pick up those valuables, I will happily help you out. I know, what a guy, right?
तेरा फुल हो गया, तू कुछ नहीं कर सकता अब मेरे लिए। 7560 डेफिनेटली क्रेडिट्स ऑफ कोर्स। ओह ये नया टाइप का है, पर क्योंकि ये कॉमन है मैं इसे बेचूंगा। तो याद रखना होगा सारे के सारे कॉमन बेचने, जितने भी अच्छे हो वो। So, craziest bar fight? सही में बहुत सुन चुका हूँ मैं क्रेजीएस्ट बार फाइट के बारे में तुम्हारे। Flip the table. Found a good use for a butter knife. Dull, but वेल मैं ओवर एनकम्बर्ड हो चुका क्या बोल रहा था, पर हाँ मैं ओवर एनकम्बर्ड हो चुका हूँ और अभी एंड्रिया को मैं कुछ भी नहीं दे सकता। सीधे कूद गए। कोई जेट पैक नहीं, कुछ नहीं। पता नहीं फिर कब मिलेंगे मुझे। यहाँ पे सारे लेते रहो। इतना एक छोटा सा पतला सा वेने पर इतना बड़ा दिखा रहा है ये स्कैन में। ये सारा एक ही है, एक को करूंगा तो सारे हो जाएंगे। ओके इस पे ही करना था। ओ ये अलग है, ये पूरे यकीन था सेम ही होगा। दे दे। क्या हो रहा है? फाइनली इतना पतला, पता नहीं कुछ मिलेगा भी कि नहीं। मिला। वहां पे भी है। और ये सब कॉपर है। ओ बाप रे बाप, कितने ज्यादा हैं ये सही में। यहाँ पे एक और है अभी भी। इधर सारे हो गए, यहाँ पे थोड़े थे। हाँ
मैं ये अभी ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा यकीन है ये कोई बहुत ही क्या बोलते हैं ताकतवर मॉड हो, सबके लिए इसकी ज़रूरत होगी और फिर तब नहीं होगा तो फिर इससे ये पूरा ढूंढना होगा मुझे। तो अभी ले लो ताकि फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास हो गए काफ़ी ज़्यादा। छोड़ो, ये आती है मेरे हिसाब से, पर फिर भी एक बार पूरा देख लेता हूँ। Craziest bar fight? 3 spacers got the drop on me. यप, सारे हो गए। Found good use for a butter knife, dull, but surprisingly effective. Other elbows than a predator burst in. मैंने ये कर तो दिया था। Jaws and bullets. Everyone freaked out. ओह ओके ओके। Nice. But still, butter knife. You are back. You did not respond when I called to you after you pulled out the artifact. Does that mean Barrett's theory and experience were correct? The artifact grants the first person who touches it a vision? The fact that it has happened to both you and Barrett is already more than we had before. I think it is important that we discuss what you saw back there. That man. What I had done. It was, yes. I appreciate that you see it that way. A very practical outlook, not one I find is shared amongst members of Constellation. May I ask what your background is? Argos. I have heard of this company. Small, reckless. Interesting. I do not have experience with this profession, but I have my own experiences with risk. We both seem to be unusual additions to Constellation. Please, I would ask that you not mention to Vladimir the circumstances in which you found me. This is not the first time that Varun zealots have attempted to corner me. If it is known that this has happened again, well, it has been a while since I was given an assignment on my own. I would not want it to be even longer in the future. Do you understand? Definitely. मैं खुद ही जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे मैं लड़ता हूँ इतने लोगों से। इसको क्यों रोकूं मैं? You are unfamiliar. This is a surprise. Few have not heard of them. They are fanatics, having taken the teachings of House Varun and twisted them into a belief that the galaxy must be wiped clean before the Great Serpent's return. So, in this I would say I have done the galaxy a favor. Yes, it would seem they have not yet learned how much it will cost them. But then that is their fundamental problem, is it not? An inability to see anything other than the path which they have created for themselves. Now I feel I need to say something. Nah. Mom, this means we are in agreement. Thank you. That is good to know. I will finish here and return to New Atlantis when I can. You should go now, as they will be expecting us. Okay. और अब क्या करना है? Add the artifact to the collection. Damn, तेरे इतने जल्दी कैसे क्यों खत्म हो गया यार? एक मिनट रुकना, क्या मैं बेच सकता हूँ यहाँ से? ओह, yes. मैं कर सकता हूँ.
इसका मुझे चाहिए यार, ये लेजेंडरी वाला। मज़ा आएगा सही में। स्टोल और रिसोर्सेस। और अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। अब तो बस सीधे बस भागना और कुछ नहीं। इसका ही नॉर्मल आवाज है ना? ठीक है, एक मिनट। स्नैप। फास्ट ट्रैवल कर दो, पूरा उधर जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं खुद कभी नहीं गया हूँ, यहाँ से इसने मुझे डाल दिया। इतने ज़्यादा हैं यार यहाँ पे सही में। मैं ख़त्म कर सकता हूँ। बाद में क्या? बाद में, अभी के लिए ये मेन क्वेस्ट का करते हैं। और प्लस मैं अपना ये स्किल का भी बढ़ाना चाहता हूँ, जो 5000 कुछ मुझे करना है विथ 75% कुछ। स्कैन कर सकता हूँ इसे। हार्वेस्ट कर सकता हूँ। अरे मगर अरे उन्हें ये भी हार्वेस्ट कर देना चाहिए था यार मुझे। ये भी हार्वेस्ट कर सकता हूँ फिर मेरे हिसाब से? नहीं, कितना हार्वेस्ट कर सकता हूँ, कितने नहीं कर सकता हूँ। इसे भी हार्वेस्ट नहीं कर सकता। इसे हार्वेस्ट करना, हाँ ये यहाँ पे ऊपर इसका दिख रहा है मेरे हिसाब से, उसकी वजह से। यस, और मैं थोड़ी चीज़ें बेच दूंगा वहाँ पे जाके। कॉन्सुलेशन में बंदी का नाम याद नहीं आता, पर उसे काफ़ी चीज़ें बेच सकता हूँ अगर मैं गलत नहीं होता। कॉकपिट। था मुझे सेव करना चाहिए, क्यों नहीं किया पता नहीं। क्यों किया मैंने ये पता नहीं। क्यों किया मैंने? ओह गलती करी, बहुत बड़ी गलती करी। भागना यहाँ से प्लीज प्लीज। ओह मेरी हेल्थ बहुत कम थी। Contraband on ship? Shit, yeah. No. इतना पीछे एक मिनट रुकना। 45 ओके, यहाँ पे आया हूँ। इसको हार्वेस्ट कर सकता हूँ थोड़ा। बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। कॉन्ट्राबैंड कैसे आ गया मेरे शिप में पता नहीं।
और फिर यहाँ पे जो भी हो कॉन्ट्राबैंड को मैं बेच दूंगा एक जगह। कॉकपिट। ओके, कहीं भी जाने से पहले मुझे ये नहीं, वहाँ पे थोड़ा चेक करना है। मिसलेनियस, ओह यस, मेरे पास है कॉन्ट्राबैंड, 10 कॉन्ट्राबैंड बल्कि। सेव करो, टेक ऑफ। ओके, सबसे पहले तो कॉन्ट्राबैंड सेल करना है, तो उसके लिए मुझे जाना है, कहाँ पर है नाम, नारियन। यहाँ पे नहीं, क्लिनिक में जाना तो है वैसे मुझे, तो ये नहीं है जो मैं सोच रहा था। वुल्फ, हाँ हाँ हाँ, जंप। तो पहले अपने कॉन्ट्राबैंड बेचते हैं। मुझे कॉल बहुत देर से भेजा। Tend to approaching vessel. Docking approved. हो जा, डॉकिंग का आ जा। हाँ, बोर्ड। अब सीधे जाओ इसके पास। Good. How may the trade authority? By all means. मिसलेनियस, ओ भाई नहीं, May I be of service? By all means. वो बेकार में मैंने उसे खरीद लिया था, डर गया मैं। ओह शिट, एक मिनट रुकना, मुझे लगता है इसके लिए पहले मुझे 48 आवर्स करना होगा यहाँ पे। बी वेट, 2 बार ये करना होगा अब मुझे, नहीं सब कुछ मिला के 4 बार करना होगा। ये करूँगा, फिर उसको पहले 5 सेल करूँगा मैं, क्या बोलते हैं, शिट यार क्या बोलते हैं वो आइटम्स को, मुझे याद नहीं आ रहा, कॉन्ट्राबैंड। और उसके बाद उसके पास बाकी जो थे उसका फुल प्राइस मिलने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो मुझे फिर से 48 आवर्स रुकना होगा। वेट, आवर्स अब। सही में बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं अनोइंग है ये ऐसे इंतजार करना। इतना अनोइंग नहीं होता अगर मैं दूसरे स्क्रीन में जाके कुछ थोड़ा चेक कर पाता अपने, पर नहीं, अगर उसमें जाऊंगा तो ये पॉज हो जाएगा पूरा।
ओके, अब उसके पास एक के लिए एटलीस्ट होना चाहिए, 5 वाले कॉन्ट्राबैंड के लिए लायक पैसा होना चाहिए। Was there something you needed? If there's anything I can do for you, please. You won't find a. यस, रिसोर्सेज, ओ नहीं, रिसोर्सेज नहीं, सॉरी, मिसलेनियस, सेल ऑल, यस टू बी श्योर। इसका भी 7,000 है, 4,000 ज़्यादा, जितना इसके पास है उससे 4,000 ज़्यादा। We're asking everyone to take care of any leeches on their ships. We don't want any Terramore storming through here. गुड आइडिया। पर अब फिर से 48 आवर्स रुको। किसी को कॉल आया था? हाँ यस, ब्लड टेस्ट वाले का। अभी भी 7 घंटे हैं। एक मिनट रुकना। 1001, 1002, 1000, 2 सेकंड से ज़्यादा है, 1 घंटा। $1001, 1002, 1001, 1002, 1000, 2.5 सेकेंड्स हर 1 घंटे के लिए। तो बेसिकली हर एक, क्या बोलते हैं, 1 मिनट से ज़्यादा है शायद। बस यार 2 मिनट से ज़्यादा इसमें खर्च हो जाता है। थोड़ा और जल्दी कर देते हैं। फॉलआउट में भी शायद ऐसे ही था, मैंने फॉलआउट 4 खेला हुआ है, उसमें भी शायद ऐसे ही था, याद नहीं है मुझे, काफ़ी समय पहले खेला था मैंने। तीन, 2, 1। चलो। If you're ever in New Atlantis, mind Good to putting see in a you. good word for me? I don't think my messages to SSNN are getting through. ये भी कर लेता हूँ। Yes, of course. रिसोर्सेस, हाँ मैं रिसोर्सेस में क्यों जाता हूँ पता नहीं। सेल ऑल ना, डिजिपिक्स काफ़ी हैं सही में। ये पूरा हो गया फाइनली, सारे बेच दिए। और फिर अब मान में क्या, पहले क्लिनिक में जा रहा हूँ मैं। पहले क्लिनिक में जाओ। नारियन, क्लिनिक। आपने एडिक्शन को ठीक करना होगा मुझे। प्लस 20 kg कैपेसिटी है अभी, और O2 जनरेशन भी कम है। कई बार बोला था करूँगा करूँगा करूँगा, तो हर बार हो जा रहा था। अल्फा सेंटोरी, देखिए कितने स्पीड तक जाएगा इससे, 150। उससे ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, सही बोलूँ तो। और डॉग क्लिनिक और भी होंगे, पर मुझे यही मालूम है बस एक। शायद एटलांटिस में भी एक क्लिनिक हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है सही में। जो मालूम है मैं उसका जाता हूँ। किससे बात करना होगा यहाँ Ain't पे? no funny stuff with that boost pack. Got enough white crap. स्टाफ एरिया है ये, बाथरूम है ये, ऑफिस।
Dr. Cartwright in Aquila City said I was crazy when I told her I wanted to transfer here. Now I kind of understand why. Secure wing. Every new alien pathogen we discover is just a little more job security. I'm no hypochondriac, but maybe we limit our time here with all the sick people. I mean, ये सारे सिख है मालूम मैं, पर मैं अपने आप को हील कैसे करूं? मेडिकल इंजेक्टर, ये मेडिसिन इंजेक्टर, ये सब छोड़ो. You catch my Ben nodding off. Give him a good smack for me. The man means well, but he's just so tired these days. Okay. You need anything, just say the word. One of the docs will get you right as rain in no time. Okay, किसी एक डॉक्टर से बात करना होगा और वो फिर स्टाफ एरिया में होंगे मेरे हिसाब से. How does she expect me to get all this done by myself? If you're thinking about going into medicine, just be really sure before you commit to it. Really sure. Need to make sure those samples get disposed of. Okay. Right step. ये नहीं है, कोई नेम पर्सन को ढूंढना होगा. सारे क्लिनिक स्टाफ वो सब है. ये रहा ना. There's such a mountain of work. I could really use a hand. But I don't want to inconvenience anyone. Just need a moment to examine you. Oh, I've seen much worse than this. We can get this taken care of, no problem. Cure my addictions. All right, this probably won't be the most painful thing, but hold still. Right as rain, as my grandfather would put it. It's really a matter of safety, believe it or not. The types of things we work with here. Let's just say you wouldn't want them spreading on a populated planet. In here, we're all nice and isolated, just in case. Not the most comforting thought, but it's the truth. Tending physician, I'm new here, so really what I do is watch Dr. Darvish's every move and try to imitate it. Sounds a lot less impressive when I say it out loud. Couldn't call ourselves a premier medical facility if we didn't have the supplies to back it up. Take a look. जानता था. देखें तो. ओह ये है. एडिक्शन सप्रेस करने के लिए बस. ये मेरे पास है शायद एक्चुअली. काफी चीजें हैं. मेड पैक कितने का है? Why not? I mean, ऐसे नहीं है कि वो कोई स्पेस लेता है. See you later. Okay, अब कोई एडिक्शन है? एडिक्शन नहीं, सॉरी, स्टेटस है मेरा? नो. तो फिर मेरे ये 215 बहुत अच्छे. चलो अब निकलते हैं यहाँ से. एडिक्शन मैंने फाइनली क्योर कर दिया. इनकी मदद करने का मैं बाद में करूँगा. मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा साइकिल्स है जो मैं ये करंट स्टेप ख़त्म करने के बाद करना चाहता हूँ. और साइड को साइड करने की ज़रूरत नहीं है. ये रहा ना मिशन. लॉज लैंड. Here's the closest thing Cora has to home. Not bad, right? वो आ गई क्या? I hope you are satisfied with the quarters available Why? to you. Was there a concern that I would not contribute to the mission? No, of course not. We thought you might be hurt.
Oh, then thank you, but it was not necessary. We succeeded. Okay. Let's get out there and do something new today, shall we? What can I help you with? कुछ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा अभी ये डाल के एक और नया आर्टिफैक्ट. Look at you two. I'm jealous. I tried following up on some leads myself, but came back empty-handed. They could be anywhere, can't they? Embedded in a rock, or in the hands of an unsuspecting novelty goods trader? A couple of scans from the eye, but it looks like you got there first. Shame on me for taking the scenic route, huh? I catch myself just staring at the collection sometimes, wondering what it all means. Maybe that's how our ancestors felt when they were looking up at the stars for the first time. They didn't just gawk at the stars, Mateo. They explored. They tested. Science brought us to space, not daydreaming. I disagree. What's the point of science if not to enable humanity's dreams? And where do those dreams come from? Not every dream is a pleasant one. I agree with Noel. The work is what moves us forward. You're with me, right? Science or dreams? Which one is the true muse of space exploration? सही बोलो तो ये एक्सप्लोर किया था हमने स्टार्स, या फिर अभी करेंटली एक्सप्लोर कर रहे हैं जैसे मून में वो सब, वो ड्रीम्स था किसी एक साइंटिस्ट का कि मैं उधर जाना चाहता हूँ, मैं उस पर काम करना चाहता हूँ. पर वो ये दोनों जरूरत है. ड्रीम्स चाहिए ताकि किसी के पास कोई एक डायरेक्शन हो कि कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और साइंस वो ड्रीम को रियलाइज करने के लिए. मैं सही बोलूं तो नहीं करना चाहता. ड्रीम्स भी जरूरी है, साइंस भी जरूरी है. ठीक है, साइंस के साथ जा रहा हूँ. Another realist has joined our ranks. I'm outnumbered. The truth hurts, Mateo. And Mateo ropes us into another round of philosophy. Can't we agree both are important? You know what? I just realized I completely overtook this whole conversation. This should be about you and Andrasia celebrating a win for the group. I do not mind being asked to join in a debate. It was good to hear everyone's sides. But I do agree that we accomplished something together. Thank you for your help. चलो इसको अपने साथ ले जाते हैं. I have no objections. Let us see what else we can find out there. Noel, pulling some interesting data from those new artifacts. Tell the Rook to meet me back on board the station. Roger that, Vladimir. He's on his way. Okay, next लगता है व्लादिमीर से. वो अभी नहीं पर. There's just so much to do in New Atlantis. Ah, hello. ठीक है, इसका पूछ लेते हैं. You do not need to ask me if you may ask. You may just ask. Honestly, I cannot answer that. So many years have been driven by survival in intense circumstances. Leisure time it's been in short supply. And I suppose I have conditioned myself to not think about it much. I do enjoy combat training, though I suppose that is hardly the answer you are looking for. You have given me something to consider. Thank you for that. I have done so in the past, when necessary, but I am not the best pilot, and it seems prudent to apply my skills where they are most useful. Lately, that means aiding you. And that, I think, has worked out very well. You might find it absurd, but honestly, the Lodge... I have never been surrounded by such a remarkable group of people, present company included. It has been a very long time since I have been someplace that could possibly feel like home. There are worlds beyond count out there, but that feeling is rare and precious. I hope that was informative. That is all? Very well. सबसे पहली बात Just तो so मैं you देखने know,
Your mother's missed you. Like a lot. I've occasionally had my doubts about Constellation as an investment. But now, well, it's clearly money well spent. It's been quieter around here ever since Vladimir went to live on the eye full time. मेरे दिमाग में अभी अभी आया, ये वो वाला सेम चीज तो नहीं फॉर्म कर रहा है जो हम विजन्स में देखते हैं हमेशा, ये सन बीच में और ये ऐसे टाइप का कुछ शायद. Oh, Barrett, have you already read that text I sent you on the nature of the human soul? I must have missed it. But it's okay, Mateo. I'm reasonably aware of these philosophies. I find it to be truly fascinating how so many beliefs have so much in common. I know everyone's excited by the artifacts, but we need to be as objective as possible and be aware of possible negative The effects. differences in thought are situational based on the history of the people whose lives it enhances. The methodology leads to alternative conclusions. Perhaps the premise itself is flawed. I understand why you say that, but I think it's my own fault for not explaining better. You're a kind person, Mateo. Maybe next time we should talk about sports instead, though. Okay. Ever since I got here, this has felt like home. These people are family. I hope it feels that way for you too. Let's trade. Have something for me? Nope. तुझसे लेने. Oh. क्या मैंने इसको दिया नहीं था क्या कुछ? Okay. सैम का. Hey. सैम को डेफिनेटली दिया है Need मैंने. help with anything? I've got lifetimes worth of books and videos to occupy me. Okay. अभी So दिख don't रहा worry नहीं है. about me. We've always considered ourselves explorers, but this really is uncharted territory, isn't it? Okay, let's take a look. सही में बस इतने? No, मैं नहीं देने वाला ये. क्राफ्टिंग का है तो मैं बिल्कुल नहीं देने वाला कुछ भी. माफ करना पर नहीं. Stay safe, okay? Hey, Sarah's the best Barrett, possible person to be running Constellation at a time like this. Focus. सैम को कहाँ है? Just a bit more information. वो मेरे चीजें लेके भाग गया. एक मिनट रुकना. क्रू कहाँ है? ये अभी लॉज में है, ठीक है. कहाँ पे? नहीं, न्यू अटलांटिस नहीं यार. यहाँ पे तो नहीं है सर. नहीं. Sometimes amuses me to think about what goes on here, right under the United Colonies' collective nose. अब वो यहाँ पे क्यों नहीं रह सकता था बाकी सबके साथ? इतना बड़ा है ये, कोई आइडिया नहीं वो कहाँ होगा. तो मैप में भी कोई ऐसा है नहीं यार जहाँ पे मैं उसे ढूंढ सकूं. नहीं नहीं. यस यस यस. ये रहा, धन्यवाद. Man, the galaxy's too big to be stuck in the same place. I wouldn't say no to a gift. कोई गिफ्ट नहीं, मैं तुझसे ले रहा हूँ सारी चीजें. टूम्बस्टोन ठीक है. 5 ले लो. इसको कोई हाई लेवल वाला दिखता हूँ. कॉर्नर रेगुलेटर इसके लिए रखता हूँ मैं. उसके अलावा बाकी सब कुछ ले लेता हूँ. या फिर नहीं,
कैलिब्रेटेड कोचमैन, हाँ वो उसी का इस्तेमाल करता था। ये एक है ना, रिसोर्सेस, टेक ऑल रिसोर्सेस, और अब बाकी सब इसको रहने दो। Goodbye. अब यहाँ से निकलो, अब मुझे भागना होगा उसकी तरफ, शिप की तरफ। I am at your service, Captain. मैं क्या, अब वो साइट को करना है, अब साइट को शुरू करते हैं। ना 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 ना, मेन बैक टू वेक्टेरा, ये हो गया। ओके ओके ओके। रेंजर अकेला नहीं। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द जॉब, डीप कवर असाइनमेंट, ये ठीक है। फर्स्ट कांटेक्ट, ये एक है जो मैं कर सकता हूँ, पर ये मिशन छोड़ दो, इसके साथ चलते हैं। चलो, अप्लाई फॉर अ जॉब एट अ र्यूजिन इंडस्ट्रीज कियोस्क, और उसके बाद वो कमांडर 2 वाला का करूंगा मैं पूरा। आउटलैंडर का को बेच देना चाहिए मुझे सही में। ज़्यादा जल्दी अब पूरा हो रहा है। आई मीन उतना भी जल्दी नहीं, 20% कम था, 20% बढ़ गया बस वापस। आई मीन 80% था पहले, उसका 100% कर रहा है, तो मतलब ऑलमोस्ट ये होगा 25% पिछले वाले से कंपेयर्ड। ओके, उसी तरफ जाना है जहाँ पे आउटलैंड है। मैंने क्या, छोड़ो, मैं भाग रहा हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा मेड पैक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये बाद में करूँगा, पहले आउटलैंड में जाके चीज़ें भेजने हैं। I would never dream of selling substandard gear. Outland has standards, and I uphold them. I do. In this line of work, it's essential, don't you think? Not seeing people come back would not only suggest that they're not satisfied with our business, but that whatever they purchased had failed, leaving them unable to return. I would not be able to sleep at night if I thought that were the case. Goodness, no, I just couldn't. You're out there millions of miles away from anything, and if something goes wrong, I can't stomach the thought. I prefer solid ground under my feet at all times. And preferably a hot, fresh coffee within reach. Can't get those in space either. Of course you can get. एक कॉफ़ी मेकर लेके जाओ और बन जाए, मिल जाएगा हॉट कॉफ़ी, हॉट और फ्रेश वो भी। Yes, by all means, have a look. वेपन्स, कटर के अलावा ये सब बेच दो। इसे रखना चाहता हूँ यार, मज़ा आ रहा है इसे इस्तेमाल करके। शिट, कंफर्म। ओके, Good luck on all your adventures. मुझे लगता मैं शायद कुछ बेच नहीं सकता ना अभी। भेज नहीं सकता ना अभी। रिसोर्सेस, यप, नहीं भेज सकता अभी कुछ भी।
ठीक है, Lives चलो ये of शुरू करते nearly हैं। every Fusion individual factory। in the settled systems are so heavily influenced by what goes on in this building. Our subsidiaries. Proud to include the following companies within our network. Number 1 in craftsmanship and style, Arboron has soared to the top of innovative weapons manufacturers faster than any of our competitors. We create reliable and durable products so you can feel secure when you need them most. The Hive Essential. Household robots का है ये. Tayo Astroneering Spacecraft. Okay. Tranquility. Tea होगा. Our special blends are made from the finest ingredients. Yes. Ooh, Blendmaster Ryujin Tower Neon. Ryujin Neon. सारे के सारे Ryujin Tower में ही हैं. इसके. Neuromaps are designed to improve overall brain function in order to boost your quality of life. They've been used in medical monitoring. Okay. मुझे कोई मेरे पास न्यूरोमैप है भी क्या कोई? Now hiring, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं. Ryujin Industries was founded by Ray DeCaris and Itaru Saito in 23-7. DeCaris had a dream of applying her vast knowledge as a biotech engineering to the improvement of everyday life, and when she met the business-minded Itaru Saito, it wasn't long until Ryujin Industries was formed. Ryujin's first product was based on DeCaris' neurological research and would prove to be a major breakthrough in technology, the NeuroAmp. NeuroAmps would propel Ryujin to the top of the tech industry and solidify their position as a major contender for years to come. It wasn't long before Ryujin Industries began to look to other major forays into the tech world. In 2310, Tayo Astroneering joined the fold and continues to be a leader in spacecraft engineering and design today. With a growing business, DeCaris and Saito worked with Benjamin Bayou to build the massive Ryujin Tower. The incredible effort would showcase the strong relationship between Ryujin Industries and the city of Neon. Ryujin Industries adding to Neon's prestige as something more than just a pleasure city, and Neon being an attractive bonus to working at Ryujin. Over time, Ryujin Industry would also incorporate Arboron, Drone, and Tranquility into their family. These subsidiaries would further strengthen Ryujin as a formidable competitor and expand their reach into different aspects of life. Today, Ryujin continues to be an industrial leader with eyes pointed towards the future. Job application. How many years of experience do you have? None. How familiar and its product 9? Basic knowledge. We got to typing and file management. Hi. Bachelor's. Yes, I guess. मैं wanted हूँ currently, पर no जाता हूँ. Officially submit. Please select submit application below. Answer. ठीक है. Travel to Neon on Wally Alpha and the Wally system. वाह भाई वाह. ये मालूम होता तो मैं पहले इसका करता. फास्ट ट्रैवल भी नहीं कर सकता, प्रॉब्लम वो है ना. चलो वो कियोस्क जो है उधर थोड़ा और चीज़ें बेच दूंगा मैं. अभी के लिए सीधे चलते हैं अपने शिप में. ना मेरे पास बहुत ज़्यादा मेड पैक्स है. ज़्यादा कम हो गया तो मैं इस्तेमाल कर लूँगा वो. तो चलो नियॉन का पहुँचने वाले. वो साइबरपंक इंस्पायर्ड सिटी है. ये रेट्रो फ्यूचरिज्म बोलते हैं ये जो अटलांटिस है, ये नॉर्मल फ्यूचरिज्म. I do not like being in small enclosed spaces with many people I do not know. I do find that statue pleasing. I wonder if it matches the original vision of the artist, or if they changed the design as they worked on it. इसके वजह से मुझे ये ज़्यादा रेट्रो फ्यूचरिज्म लगता है. अब
मैं ऐसा बोल रहा हूँ जैसे मुझे माल में रेट्रोफ्यूचरिज्म क्या होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं। मुझे कियास को सब चाहिए बेचने के लिए चीज़ें, और अपने शिप को भी ठीक करना है मुझे। या Hey, what can I do for you? And yes. Okay, sure. We'll take care of any holes, broken seals, that kind of thing. Everything looks good here. I'll be at my booth if you need me. वेपन कटर के अलावा बाकी सारे बेचने हैं। रेजर बैग भी नहीं, ऑफ कोर्स। रायन का क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं? क्रैकन ये जरूरत नहीं है, और रायन ऑलरेडी कोई एक है ना मेरे पास। हाँ 56 प्लस 25 इंक्रीज इन अटैक स्पीड इन स्पेस। इसका क्या है? यार इसका कितने हैं वैसे? कोई मॉड्स भी नहीं है इसका, इसलिए मैं नहीं रखना चाहता। इसके भी कोई मॉड्स नहीं है। में क्या? अरे काश में से सोल्स्टिस 31 63, बाप रे बाप। randomly applies a bleed effect to the target 31 76 25 max 16 5 39 1.3। क्या है? 5 है इसके कोई भी मॉड्स नहीं है। भेज दो यार इसे। रैपिड और आयन इसे भेज दो। मिसलेनियस और कुछ बेचने के लिए है क्या मेरे पास? हाँ पूरे पैसे ले लिए मैंने। I also wish to be prepared for any situation, but there are practical limits, no? Cargo, resources, store all resources। कार्गो होल्ड कितना है? अभी भी 4000 लगभग, 400 से भी ज़्यादा डाल सकता हूँ इसमें, और वो फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ा पाऊँगा मैं इनको निकाल के, ज़्यादा कैपेसिटी वाला डाल के। अभी के लिए नियॉन सिटी चल रहा हूँ। को पूरा फुल करो। और कहाँ पे है ये रहा। स्कैन अनअवेलेबल, सेट कोर्स। एक मिनट, ये बाउंटी को मैं कर दे रहा हूँ यार, 70 पे कर दे रहा हूँ। Contraband. Scan complete. Scan. कोई रिसोर्सेज दिख रहे भी नहीं है। हाइड्रोजन और ये क्या है? बेंजीन। लैंड।
ये रहा नियॉन। Not exactly what I was thinking. मुझे इस साइबरपंक था, मैं श्योर हूँ, और इसके वजह से भी अभी भी लग रहा है ये साइबरपंक ही है। The effort to make this place livable is astounding. There's no end what can be accomplished when there are credits to be made. या सीधे चलते हैं र्यूजन टावर्स की तरफ। हेल्पफुल कर दो। Security cares far more about what you take with you when you leave Neon than what you bring into it. Terminal. Don't move, Nesha! What's this about? Cut the act. Sniffers picked up the Aurora you're carrying the second you step through. All right, get up slowly and turn around. Try to run, and we open fire. So, what was the plan, Nisha? Smuggle the Aurora into Aquila City or New Atlantis? No, I just forgot I was carrying it, so honest mistake, right? Can we just settle this right here? I can pay the usual. We don't make the rules. That's Administrator Bayou's job. Now, shut up and start walking. Move it! Let's go! Yeah, Frank Rennick's all in a twist because his robot got vandalized. We had a good laugh about it back at the station. हाँ ये एक और Yannick's got साइड क्वेस्ट। चलो मैं भी चलता हूँ अब। ये अंडर वाटर है क्या? एक मिनट, नियॉन। There is little question that Ryujin has some influence here in Neon. I wonder how Mr. Bayou feels about that. मुझे यस कर लेना चाहिए था, मुझे लग रहा है ये क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में। चलो एक्टिवेट ऑपरेशंस। एक मिनट रुकना, ऑपरेशंस और बाकी दो क्या थे लेवल्स? टायो, एस्ट्रोनियरिंग और ट्रैंक्विलिटी, और ड्रोन एक ही है। लगता है अभी ट्रैंक्विलिटी और ड्रोन उतने बड़े हुए नहीं है कि उनको सेपरेट मिल जाए। लेन ग्रासा से बात करते हैं। You must be one of the candidates that Imogene Salzo is interviewing today. Her office is down the hallway to my left. Take another left at the conference room, follow it around to the right and up a small flight of stairs. Then take a left and keep heading that way until you see her office. Sounds like a maze, right? So if you want me to walk you back there or have any questions, just let me know. And hopefully I have some answers. Oh wow, you're serious? Well, Ryujin is the tech industry leader in the settled systems, mostly known for neuroamps which exploded on the scene about 15 years ago. Other than that, our products include operating systems, security, various quality of life improvements for the home. We're like a full package. If you really want more info, I'd recommend reading up at one of the kiosks. They've got this company's entire history listed. At least the history they want you to know. Imogene Salzo is my idol. She's ruthless, but still knows how to behave around everyday people, if you know what I mean. She's probably next in line to take over for Ularu Chen, head of operations here, which would be a godsend considering Chen has no filter and loves to speak her mind. No one loves brutal honesty that much. Between you and me,
I think Imogene is about done with the whole process. You won't believe the people we've been getting. I heard the hiring algorithm Yuko made approved all applicants. And of course Yuko bailed when interview time hit. It's technically her job. And Imogene is furious. Good. Best not keep Imogene waiting too long. And the offer still stands if you need someone to show you the way. Nah, खुद ही कर दूंगा. Great. Well, good luck then. I'm sure I'll see you on your way out. मैंने पूरा वो डायरेक्शन सुना नहीं था शुरुआत से सही बोलूँ तो अच्छा हुआ ये दिखा रहा है. I suspect that if I were confined to life in an office like this, someone would end up being stabbed. Oh shit, अभी भी मेज है पर. I've got my eye on you. Okay. ये रहा ना. यहाँ से. I hope I can wrap up this next assignment quick. The Razor Ball tournament starts tonight. Oh, एक छोटा सा रोबोट, cute. Great. A full spacesuit. Corporate environments aren't that toxic. Have a seat. And your friend can wait outside. I'm sure they understand. Make sure they understand that in the end, they need you more than you need them. धन्यवाद एंड्रेजा. वो आ रही अंदर? Hello. Until next time. आ गई अंदर. All right, just to get a few things straight here. I'm Imogen Salzo, Senior Operations Specialist here at Ryujin Industries. I don't normally do this, but my counterpart Yuko is indisposed at the moment, so here I am. We're looking for someone to fill an entry-level administrative position. Apparently, our algorithm has failed us and believes you to be a decent match, which I'll take up with our technicians later. So, let's get this over with. Why do you want to work for Ryujin Industries? Money. Yes, money. I can appreciate an honest answer. And if you're hired, you'll be making far more than just a few credits. Provided you're successful, of course. This next one should be interesting, considering you marked having 0 experience. Why do you consider yourself qualified for a job like this? Persuasion. चलो try करते हैं. Including this job? The art of the deal can go a long way here. If what you say is true, you'll have department heads fighting over you in no time. How motivated are you to succeed? It depends on what I'm working towards. Kaafi, ठीक है. All in, huh? At least that's an attitude we can work with here. And finally, my last question. If you worked here for 5 years, what role would you see yourself in? You. In 5 years, I'll be running this company. Full disclosure, it's all about making deals with the right people around here. You put those skills of yours to good use and choose the right sides. You probably won't be running the place, but you'll be right next to the one who does. So look, since there's a million other things I'd rather be doing than this, not to mention that this isn't even my job, you're hired. On a probationary period, of course. First order. There's a meeting starting soon, and I need you to pick up the coffee order at Terra Brew. Fairly easy, so you shouldn't be able to screw it up. If there's a line, skip it. Tell them you're here for Imogen Salzo, and you should get served right away. सही में ये करवाएंगे हमसे. Well, सेक्रेटरी के लिए ही हमने अप्लाई किया था, तो of course सेक्रेटरी वाले जॉब मिलेंगे हमें. Make it quick. I have a deadline.
तो मैं क्या करूं? मैं तुझसे बात करने नहीं आया हूं। क्वीन एविडेंट नहीं। तब कुछ बोलेगा? नो। लॉबी। मेरे पास फुल अथॉरिटी है लाइन को स्किप करने की, तो मैं लाइन स्किप करूंगा। My mother wanted me Everything you need for all your daily adventures. Enjoy a cup right now. Howdy. Hi. Hi Is it there. Melania? Welcome to Terra Brew. How can I help you? Corporate policy requires me to state that everything Terra Brew offers is my favorite. Oh, the Ryujin order. You must be new. What happened to Tomo? Did he finally get that promote? I got fired is what happened. And this is the soulless suit they got to replace me. Tomo, I'm sorry. I know how hard you were working for that promotion. 4 years behind a desk, getting coffee, kissing up to that high and mighty Ularu Chen, just to get replaced by this nobody? Okay. Like, who knows? I looked at someone wrong. The coffee wasn't hot. They didn't even have the decency to tell me. They just had security escort me out of the building, like some criminal. You don't even know your own boss's boss? Ularu is Ryujin's head of operations, or resident shark, if you ask me. If she smells blood in the water, you're dead. Yeah, I bet you are. No one's ever sorry in this business. And now that I've been terminated, it's only a matter of time before they send you after me. So I'm taking matters into my own hands. Persuasion है मिलेगा? Believe me, it's either you or me. I believe you have grossly misunderstood the situation. If you put the gun down, perhaps we can come to an understanding. Persuade करूँगा तो ये इसे पसंद नहीं आएगा। You want to talk? Oh. I'll tell you what. You get one chance to prove you deserve this job. Change my mind, and I'll walk away. Fail, and I think you know where this is headed. Oh. These? Yes. No, I have to do this. You don't understand. You can't be that good. Not yet. Look, at some point, Ularu really will send you after me. Just promise me you'll remember this. That when I came after you, I gave you the chance to talk me down. Let's just say Ryujin doesn't like loose ends. Chen fired me, and now she's gonna see me as a liability. And that's why it's just a matter of time before our paths cross again. Okay? And when they do, I'm just hoping you'll listen to me, like I listen to you. Okay. You're either one of the few good people in Neon, or you already know a thing or two about leverage. Just don't make me regret this. Time does come. I expect you to keep your word. Enjoy one of our distinct coffee flavors. मैं इससे ये उम्मीद नहीं कर रहा था। मुझे लगा था ये पहली बात जब मैं अगर परसुएट करूंगा तो ये डिसलाइक बोलेगी, अटैक पसंद करेगी, और अब इससे मैं मौका दे रहा हूँ, वो पसंद है इसे। मैंने एकदम गलत समझा इससे। मुझे लगा ये सारा वैगनर के एकदम ऑपोजिट होगी, पर नहीं। Oh well. Hey, no worries on anyone calling security here. Take it from me, Ryujin will handle any drama that may come from this. You'll want to be sure to report it to them. Tomo had been Ryujin's errand boy for some time now. Lots of ambition. Dying to get up that food chain, if you know what I mean. He always seemed really nice, so a stunt like that? I never saw it coming. Ryujin has connections everywhere.
Even Benjamin Bayou. You know, the very man that runs Neon. They're practically untouchable around here. Just getting in with them, you're setting yourself up for life. Well, provided you don't get fired first, of course. Are you serious? That's the most excitement I've had in months. I feel like I should be thanking you. Oh, okay. Yes, of course. Here it is. Oh, and please let Mr. Cho know that we did have the recommended maintenance done. I triple-checked the grind myself, and a mistake like that will never happen again. Enjoy one of our distinct coffee flavors. उसने किसको बोलने के लिए बोला मुझे याद नहीं है. If we don't have it, we can get it. मालूम है क्या, मैं अपने YouTube स्ट्रीम में एक बार थोड़ा पीछे करके देखता हूँ. मुझे जानना है कि मैंने क्या बोला एग्जैक्ट. उसने क्या बोला. I mean, Mr. Cho, you have the recommended maintenance done. ठीक है, मिस्टर चो को याद रखना होगा, जो भी मिस्टर चो हो. पता नहीं कौन बात कर रहा था. जैसे मैं बोल रहा था, चेक किया ऑनलाइन और मिस्टर चो को बोलना है. मेंटेनेंस कर दिया है फैमिली. मिस्टर चो कौन है मुझे नहीं मालूम. ये क्या मिस्टर चो? Taking a break? No. Don't wander into any restricted areas. मिस्टर चो कौन है? वो है क्या? मुझे नहीं है. ओके. I hope that coffee is still hot considering the time it took you to get it. You either need to learn this city or how to deal with distractions. So, what was the holdup? Good answer. And the one I was hoping for, since we learned of the incident before your return. Your handling of the Tomo situation has caught some attention, and we'd like to try you out in a different role at the company. And since Yuko isn't here to object, your new position starts right now. So, congratulations, you've been promoted. Not bad for your first day, right? You were right to talk the situation through, rather than letting it escalate. No more coffee errands, but depending on how you look at it, the word errands technically still applies. Let me explain. I'm promoting you to junior operative. The position is a bit more complicated and completely confidential. Your main duty is to add influence when necessary to ensure success of the business. Any questions so far? add influence मतलब धमकी देना. In any case where a threat to success is established, one of us is sent out to create a more desired outcome. This may be through a conversation or presenting some new information. It's all very situational, as you'll soon see. Well, it depends on the job, really. If someone can't be persuaded with words, perhaps a more forceful approach is necessary. You're basically removing obstacles from the equation. Like any good corporation, we consider what we do here to be a trade secret. If others knew and could mimic our actions, it would take away our edge. Really? Well, this transition may be easier than I thought. Now, let's get that coffee delivered. I'll gladly take mine. And since Yuko's still a no-show, feel free to keep hers. The other recipients are eagerly waiting for you in the conference room. Yes? Oh, वो रहा. Camden Joe. Genevieve Monahan, Camden Joe और What is it? Alexis Pierce. Rafiq Hamza नहीं.
एक और क्यों बाद में क्यों ऐड हुआ वो चौथा? 2 मिनट है ना। ठीक है चलो बात करते हैं उनसे। किसी को परसुएट करना होगा। कैम्डन चो के साथ शुरू करता हूँ। एलेक्सिस प्राइस, भैया इसका क्यों नहीं आ रहा है? तो ठीक है लिंडन कैल्डेरी के साथ शुरू करता हूँ। Ah, Kaafi. You'd think we'd want to support our own subsidiary and get tranquility more often, but Terrabrew it is. Terrabrew would be a substantial purchase, but we fully intend to develop the Tranquility brand. Current projections are set to surpass Terrabrew within the next 5 years. Tea talk aside, allow me to introduce myself. I'm Lyndon Calderi, Chief Financial Officer. I'll be the one deducting expenses from your pay every time you manage to screw up. Which hopefully won't be often. Yes, mistakes are often costly and involve substantial cleanup, both literally and figuratively. Law enforcement, witnesses, evidence, everything has its cost. We'll see. We've yet to have an operative with a perfect record. This introduction was not annoying. I hope our future encounters are as productive. Okay, Lyndon Calderi से हो गया, Camden Cho उसको अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ। Kaafi, finally. Well, let's have a look at you. I'm quite dismissive, I know. Sounds like something my son would say. And no, I don't mean that as a compliment. I'm Alexis Price, head of the legal department here, and I'll be direct. Any legal troubles you cause as an operative, witnesses, getting arrested, are my troubles. So steer clear of law enforcement. We may have connections with Administrator Bayou and the Freestar Rangers, but they aren't the ones I prefer to abuse. For one, our connections with Bayou automatically grant us a slight connection with the Rangers. He has some amount of influence with his seat on the Council of Governors. But our strongest connection is local, with Ranger Price. He's the Freestar Ranger stationed here on Neon, and much to my dismay, my son. He could have been an amazing lawyer or businessman. But instead, he's chosen to waste his talents to protect the people of the Freestar Collective. Administrator Bayou runs Neon and is on the Freestar Collective's Council of Governors. We have a long-standing symbiotic relationship due to the contributions that Ryujin Tower brings to Neon. ये बोलने का मन कर रहा है मुझे सही में। Unfortunately, I can't argue with that. Completing your assignment is the priority. Just be aware that some of us still have to suffer the consequences. इसके साथ क्या प्रॉब्लम है यार? Finally, हाँ। So, fetching Kaafi 1 minute, and junior operative the next. Camden Cho, supply chain manager for Ryujin. We won't work together much, but as part of the same department, hopefully I'll be seeing you around. I have the glorious job of keeping all the departments supplied with exactly what they need. Anything from rare materials for R&D to slates and design software for marketing. You could say I'm the one aspect of operations that keeps this department legit.
Well, not compared to you field operatives or technicians, but it is a vital role nonetheless. Anyway, welcome to the team. Oh, and just a heads up, people in your position don't typically see the brighter side of Ryujin Industries. But rest assured, this is a great company, and the work we do goes toward benefiting millions. Oh, मैं वो वाला चूज करना चाहता था यार, ग्राइंड का. I get your point, but if anything, take comfort in knowing that you're the one deciding the methods behind your assignments. Not only that, but corporate espionage is the norm. Ryujin just handles it better than most. Competitor operatives have done far worse to accomplish less. Well, neuroamps for one. They aid in mental illness, confidence boosting, and focus. Drone robots for maintenance and security, tranquility for relaxation, Arbron for protection. Your work only helps us improve and expand upon these products that so many people love and benefit from. Please do. It's easy to get wrapped up in the bad if that's all you see. Of course, you'll be forming your own opinions as you go. Just keep an open mind. Oh, and thanks for the coffee. यार मैं वो बोलना चाहता था. Just what I needed. Imogene said she hired someone new. I'm Genevieve, head of marketing and public relations. Having a brand following definitely has its perks, but it's the others we like to focus on. Anyway, it's good to put a face to the new operative. The only question now is how much work are you going to be? Cleanup, of course. Journalists are pretty quick at putting two and two together. And I get the pleasure of making sure those connections are never made. Or, if they are, handling the fallout. Yeah, that's what they all say. Just know that one screw-up for you means a lot of overtime and sleepless nights for me and my team. So, any precautions you can take will be greatly appreciated. Okay, सबसे बात कर दिया और इससे नहीं बोल पाया मैं, जो वो कॉफी गर्ल ने बोला था. अभी भी अपने ऑफिस में क्यों है ये बंदी? I hope you enjoyed your little meet and greet. I thought you'd like to know the execs who you'll be impacting while on the job. That doesn't surprise me. Now that you've met a few of the execs, let's get you started. We have reason to believe that our friends at Kelt Corp are trying to hack into our R&D server, since we're both competing for a contract right now. Hardly. This is the standard run-of-the-mill tactic we've come to expect from them. We can't allow them to win the contract, nor can we allow the action to go unpunished. I'll be giving you a data slate with a file that you'll need to upload through one of their computers. Think of it as a lesson that Kelt Corp gets to learn the hard way. That's up for you to determine. Think of it as the creative aspect of your job. There's always more than one way to get a job done around here. Remember, this is confidential. We can't have anyone at Kelt Corp getting suspicious. When all is said and done, it should be as if you were never there. Here's the data slate. Good luck. Unmarked data slate. Okay. तो छुप के जाना है मुझे. There's always work to be done. Pace yourself. The gala at the new Atlantis Freestar Embassy. That'd be a good way to gather intel. Oh. Intel कौन सा Intel? ये सेल्ट कॉप के बारे में? जाऊं कि नहीं या फिर वो किसी और चीज के बारे में बात कर रही थी?
और 2 डिजिपिक भी दिए इसमें, मतलब कोई और बगल से जाने का रास्ता होगा, एकदम फ्रंट डोर से नहीं, आगे के दरवाजे से नहीं, कोई साइड एंट्रेंस होगा जो मुझे ढूंढना होगा। Instant sensory overload. Okay. Neon security, neon security. तो समय लगा समझने में कि क्या लिखा उधर। I do not know about you, but I am starting to suspect that Benjamin Bayou has a slightly inflated view of himself. Okay, Cell Core भी है, Core Kinetics, Sprout Acclaim भी है यहाँ पे। Okay. इसके वजह से बोली। Okay. Security's got its eyes on Saburo Okadigbo. Guy's trouble for the status quo, if you know what I mean. तब ये जो बात कर रहे थे वो इसी के बारे में था, सबूरो अकुडम, पर इसने बात करना शुरू कर दिया, उसका सुन भी नहीं पाया मैं, ना पढ़ पाया, वो 2 जो बात कर रहे थे। Clearly the intent is to get us into the Astral Lounge. Shall we follow the signs? If you're wondering what that smell is, it's neon. Save. Okay. Celt cop. Okay. Something I can do for you, love. इससे बात कर लेते हैं? ये नहीं. Again. Look, you can tell Mr. Okaribo that I'm doing everything I can. Blood from a stone, if you'll pardon the expression. You have me confused with someone else. Oh. I'm afraid I've stepped right into it again. Damn. You aren't here about Mr. Okadibo's debt to Kelkor. Oh, this is so embarrassing. Let me start over. My name's Clover McKenna, but you can call me Chloe. Sorry for me outburst. That's kind of you. This mess with Mr. Okadibo over at the Neon Mining League has really thrown me off my game. It's a shop over in Akuchi Market. You know, the plaza next to Ryujin Tower? They sell all sorts of mining supplies and raw materials. It's a fine little shop, well-stocked and immaculate. Mr. Okadibo is the owner. He's a lovely, lovely man, but his aspirations are one grav jump longer than his business instincts. Normally, yes, but in this case, Mr. Okadibo has put me in a real bind. Mr. Okadibo owes a substantial debt to Keltcor. I've given him more than enough time to try and come up with the money, but my father's patience is running out. Frankly, I don't know how much longer I can stall. For now, but let's not mistake my position for what it really is. A test set out by my father. He's set to retire in a few years, and I'm his only next of kin. But I'm guessing he's not sure if I'm ready to take over the company. So he shuttles me out here for 2 reasons. 1, to flash a friendly face for our clients he flies out here as a perk. And 2, gets his firebrand of a daughter as far away from him as possible. He's a real piece of work. Niall? Oh, he's the CEO of Kelp Corp. The whole blessed thing. If you asked him, he'd claim he started the company with next to nothing and built it into a megacorp in under 30 years. Truth is, he tends to forget the multi-million credit trust he tapped into as a crutch. But that's my father for you. Because my father has a ridiculous sense of humor, and I can't stand the name Clover. I mean, seriously, Clover? Our family's Irish, for God's sake. I don't think he could have possibly been more on the nose with that name.
Ha ha, very funny, Dad. We're a tech company that primarily specializes in mining operations. We handle everything from individual standalone units to fully engineered outpost systems. Basically, if it's made of rock, our gear chews it. Might not be as glamorous as some of the other corps in this building, but it pays the bills. You'd be willing to help out. That's awfully kind of you. No, you've got it all wrong. Saburo, Mr. Okadigbo, he's one of the nicest people you'll ever meet, especially in this city. He really needs help, but he's too proud to accept any money from me. Maybe he'd listen to someone like you? That is a rather personal question, and I would prefer we kept things professional. If you don't mind. Oh, that'd be splendid. Just amazing. If you can get his debt off my conscience, I'd be grateful. It's been on my mind so much I've been keeping a diary. And don't worry about payment. I guarantee you won't be disappointed. McKenna always keeps that promise. Okay. When he opened the shop, he outfitted it with equipment from our company. Spent a bundle of cash he didn't have. Obviously, business hasn't been going well, because he's fallen way behind on his payments. Opening a mining business on a world almost entirely covered in ocean probably wasn't the most savvy of business plans. I suppose he intended to cater to travelers that were passing through our system. But it's clearly backfired. A poor man. Nice visiting with you. मुझे लगा था ये इससे बात करने से कोई यहाँ का हो जाएगा. I'm glad I ended up at Keltcorp. Miss McKenna treats her employees like family. Private sector. Now that's where the real money's at. 2 मिनट देना. ये सेव करता हूँ. Oh shit. Hidden. और अब ये करते हैं. एक. ओह ऐसा. एक. ठीक है ये हो गया. ये और ये. ठीक है करते हैं. शुरू करते हैं. पहले आसानी से हो गया ये तो. ये और ये. Consolidated mining status in transit. Consolidated mining status pending approval. 6 Sisters mining status processing. Okay. That. I never had the patience for computer systems. What do you want to do for the break later? I don't know, but I gotta get out of here. It's been non-stop interruptions since this morning, and I'm not spending another break at my desk listening to Cody eat with his mouth open. One of those days, huh? More like one of those months. You know what? Screw it. I'm going to Terrabrew right now. Yeah? I'll go with you. We can pick up an extra for Chloe if she asks. Yes? Okay. What? Hello. Okay. ये मुझे इनको कर दिया और किसी ने हमें देखा भी नहीं. ये वाला पूरा ख़त्म करने के बाद मैं ये मैकेना का देखता हूँ. क्लोई मैकेना का. मोस्ट प्रॉब्ली एडवांटेज ले रहा है वो बंदा. स्टॉक तो बारू या जो भी उसका नाम है. ओका डिग्बो. नाम क्या था उसका याद नहीं आ रहा.
जो भी था नाम उसका। ऑपरेशंस। किसी ने हमें देखा नहीं। आसान था ये, सही बोलूँ तो। कितना आसानी से हिडन हो गया मैं। ज़्यादा मुश्किल लगाता हूँ ये होगा। Report isn't bad, but you're going to need more supporting evidence. Imogene's a stickler for details. ये That's सैम what I है। was afraid of. I just hate accessing the Combatech database. It's anxiety-inducing. एक मिनट रुकना। कहाँ है सैम को? यार। I know what you mean, but that's your missing piece right there. All right, I'll get on it. मैं गलत सोच रहा हूँ क्या, या फिर ये सैम को मॉडल है? सैम को का? As technicians, we handle prep and post-op work. Beginnings and ends, basically. Well, look who survived their first assignment. How'd it go? Anything to report? ये सही में बोलने का। A fair question. We may have plenty of eyes and ears out there, but I'm still going to need an answer. Not a single setback. Huh. I knew you were going to be perfect for this job. If you recall, setbacks mean a lot of things for a lot of people. Payoffs, cover stories, cleanup crews. You get my drift. The cleaner your work, the more intact your payments stay. I'm sure you understand. Yes, यही बोलता। Exactly. In the meantime, I'll make sure that slate is properly disposed of. So, now that we know you're capable of handling some light cyber mischief, let's try your hand at a little framing. One of our subsidiaries, Arboron, is currently competing for a contract against Laredo. Now, the buyer likes to keep their associations clean, and will be sending a representative to Laredo in Aquila City for an evaluation. We just need you to visit their office first and accidentally leave behind some incriminating evidence against their company. We want a clean and careful job. Obviously, we don't want any bad press at this point, or we could lose the deal. I don't want to hear any news about bounties or bodies coming out of Aquila City. Okay. The inspection will be similar to an audit. These things are usually pretty thorough. Filing cabinets, desks. I trust you can be smart about it. Good. This one should be easy to pull off. Laredo has their own building, unlike CaltCorp, so at least there's only a single layer of security to deal with. Here's the slate we need you to plant. It holds confidential files that'll cast the perfect negative light on our friends at Laredo. Now, get going. Okay. अकीला सिटी जाना है। अकीला सिटी अगर जा रहा हूँ, नहीं, माई शिप यहाँ पे है ना। शिप के पास भेज दे प्लीज। धन्यवाद। ये काफी लो है सही में, ये पहले भी बोला है मैंने, पर फिर भी बगल से जाना पड़ता है, इसके नीचे से नहीं जा सकता मैं। चलो अकीला सिटी चलते हैं। Always a satisfying moment to return to your ship. देख करो। Anything I can do for you? Nope. कुछ नहीं। अकीला सिटी।
हो जाएगा। Welcome to the Freestar Collective. Please maintain your current course while we scan your ship. You're good to go. Have a nice time in Aquila City. ठीक है, एम दबाना है यार, वो करने की जरूरत नहीं वैसे। अकीला सिटी। चलो, लरेडो फायर आर्म्स इन अकीला सिटी ना, संभल के करना होगा ये। वहाँ पे पास में ही है। सेव करो। कहीं बगल से जा सकता हूँ क्या मैं? Get certified in time? You heard of the Helios retreat? It's supposed to be some new age healing center for reforming criminals or whatever. Going up in Ixal too. I'm not holding my breath. ये एक और साइड क्वेश्चन मेरे हिसाब से, या मैं नीचे जा सकता हूँ यहाँ से। ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली। मैं उम्मीद, यस, ये रहा ना। हिडन हूँ अभी के लिए। Let them. A few beer bottles and graffiti is the least. Yes. ये हिडन हूँ अभी के लिए। हमें क्या? Oh shit. You lost? कोई और तरीका है क्या? यार You see, can't be that bad, can? You keep everything on the level. We'll get it. ये फिर से अकेला सिटी है। हाँ, ये देखे तो जरा, पहले इसे बंद कर दो। ये नॉविस है, आसानी से होना चाहिए। ये और ये और ये तो फिर करते हैं। Good. Not exactly what I was expecting. उम्मीद कर रहा था एक और तरीका होगा। इसे बंद कर दो वैसे, और ऊपर जाते हैं। Hidden. Unlock. एक, नहीं नहीं नहीं,
ये या फिर ये और ये शायद, हाँ, और फिर ये वाला और शिट, ये और ये, हाँ, ये और ये, ठीक है, करते हैं। How quickly can you get that done? Shit. सेव करो। नॉविस वाला ये फिर से। ये और ये हो गया, ये और ये, तो ठीक है, करते हैं। Announcements. This is a reminder to all employees that security training is mandatory and must be completed by the end of the month. ठीक है? As you should all be aware, our quarterly meeting is fast approaching. Attendance is not mandatory, but secure connections are required. We encourage anyone who wishes to join to contact IT to confirm their setup is secure. We know the press has recently reached out to several members of our staff. Should you be contacted, please reach out to a public relations representative before responding in order to avoid any unforeseen repercussion. ठीक है? ये हो गया, ये और ये, तो फिर करते हैं 1 2 मिसलेनियस इंस्पेक्ट। दिमाग में क्या, मैं ये देखना चाहता हूँ इसमें है क्या। Cannot equip this item, ठीक है। अबे स्टील, इसके वापस यहाँ पे आने का इंतजार करना होगा। कोई आइडिया नहीं वो कहाँ पे अभी करेंटली। अब वो मुड़ेगा और यहाँ पे आएगा, इधर बैठेगा वो। मुझे लगता है ये मैंने सही किया है, सही बोलूँ तो काफी खराब किया मुझे लगता है। अगर किसी ने कुछ रेज नहीं किया तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। देखते हैं, जाके बात करते हैं। उम्मीद तो कर रहा हूँ कि ये डिटेक्टिव के वजह से कोई इशू नहीं होगा। क्या कर रहा हूँ? यस, ये आसानी से कर सकता था। देखते हैं वो क्या बोलती है। मुझे शायद फिर से लोड करना पड़े उस, डिपेंडिंग ऑन वो क्या बोलेगी।
right. धन्यवाद। अब सीधे चलो। कितना दूर रखेंगे ऑफिस से? Some would say this place represents all the worst impulses of humanity. ओके, लिफ्ट के पास एटलीस्ट नीचे तो हमें छोड़ दिया, इधर ऊपर नहीं फिर से। अभी के लिए देखते हैं। डिटेक्ट थोड़ी बार तो हुआ था यार, मैं उम्मीद करता हूँ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। There's always work to be done. Pace yourself. I was hoping you'd show up soon. Is it done? Don't get too comfortable. Those who do usually don't last long in this field. Now, I think it's time to examine a different set of skills. Nice. Good. This next assignment could be a little more flexible than the others. Your next assignment is to find the security chief and use some creative thinking to obtain their security keycard. And when I say creative, I don't mean with a weapon. Either look the part and be persuasive, or be quick with your hands. Persuasion के साथ जाना होगा। We just need some easy access to competitor security. Sometimes obtaining a legitimate form of access is preferred over brute forcing it. A security chief isn't going to give the time of day to just anybody. A nice suit should do the trick. Or, who knows, some operatives are known to have a security guard uniform or two in their closet they can rely on. Just be careful. Getting caught could mean a mess, and cleanup isn't cheap. Good luck. I'm sure you'll be able to get that keycard without incident. Just remember, if anything does happen, it's up to you to bail yourself out. मेरा सूट और सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म ना, मेरे पास कोई सूट नहीं है, तो सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म को ढूंढना होगा। कहाँ जाना है वैसे मुझे? क्लिनिक। ओह डैम। ठीक है, मुझे शायद मालूम है सिक्योरिटी विंग एक था, उधर जाना होगा कहीं पे शायद। और ये जो सिक्योरिटी चीफ की बात कर रहे हैं वो उसका हस्बैंड है, जिससे इतने बार बात किया हमने, क्या बोलते हैं क्लिनिक में, वो बंदी जो है रिसेप्शनिस्ट या नर्स, एक्चुअली रिसेप्शनिस्ट नहीं, सॉरी, नर्स जो है। मैं ऐसे क्यों जा रहा हूँ? ये है ना, चलो निकलते हैं यहाँ से। Any adventure you can fly away from. अंडरग्राउंड नहीं है, यही है, इसको कवरिंग के ऊपर दिखते हैं हम। वो इस तरफ है। नो, ये है ना क्लिनिक। हाँ, गैस प्लांट पे क्यों जाना चाहूंगा मैं? खेल क्यों करूं बेकार में? वो सब बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ।
aboard. और सेव करो यार, सेव करो। उधर जाना है, पर उससे पहले मुझे एक सिक्योरिटी यूनिफॉर्म ढूंढनी है। Looking for a nurse? That ain't me. ये क्या है फिर? Recent messages from Rebecca. Don't forget to put in that vacation request. It's been too long since we had a break. Can't wait until we have some quiet time at the cabin on Montara Luna. I'm going to fish all day and then at night, well, you'll see. The last courier ship from Aquila brought a slate for you. You were out of your office, so I left it on your desk. Aquila, huh? To all staff, we have had a few recent incidents of personnel entering into the VIP wing without authorization. Please respect the privacy of our VIP guests and do not enter the VIP wing without express authorization, no matter what. See me if you have questions. Did you hear about the bank heist in Aquila City? I just read about it on a news slate. I hope nobody we know was hurt or killed. Sounds like the Shaw gang was behind it. No surprise there. I sure don't miss living on Aquila. I'll never take the peace and quiet of the clinic for granted again. Okay? Dr. Cassidy claimed that a patient in the VIP wing became confrontational and threatened violence when he tried to administer a medication. I spoke to the patient, Catalina Rivera, and calmed her down. She agreed to take the medication. Nurse Armistead filed a report that a patient in the VIP was found in an off-limits area. Patient identified as Catalina Rivera was found to be inside a CERV shuttle and was asked to return to her room. Patient cooperated and apologized, explaining she had become lost. Patient filed a complaint, and instead of speaking to security about a lack of personalized attention and to inform us that her symptoms were not being taken seriously enough, and insisted on speaking to security about a lack instead of speaking. I informed the patient that was a medical matter and not a security issue. Patient said she was aware of that but did not feel the medical staff were listening to her concerns. Candace Doolin है, Catalina लगा था फिर से. Listening to her concerns and had nowhere left to turn. Spent an hour listening to the patient. She seemed to calm that which seemed to calm her down. ठीक है. Be careful if you run into those ecliptic jerks. They fly around like they own settled systems. And they like to use old abandoned facilities as outposts. You know, the ones left over from the colony war? Staff area उधर है ना, तो security वालों का भी staff area यहाँ पर ही होगा. Break room नहीं, फिर भी देख नहीं, ये नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है. Dr. Cassidy, kitchen, storage. Warning. This unit does not possess advanced surgical capabilities. Okay, यहाँ पे मिलेगा. नहीं. Detected, ठीक है, समझ में आता है. Shit. Never a dull moment. स्टील का छोड़ दो, मेरे पास बहुत है. ये ट्रॉमा पैक भी काफ़ी है और मेड पैक तो डेफिनेटली बहुत है मेरे पास. हिडन हूँ ना. मुझे जो चाहिए वो यहाँ पे दिख रहा नहीं है मुझे. वेयर सूट सिक्योरिटी और सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म, तो वो कहाँ पे है? एक मिनट रुकना. यहाँ पे नहीं है. ना, इधर भी नहीं है. Authorized personnel only beyond this point. Move along. You had a chance to talk to Dr. Cassidy. Really fun guy. So dry. I almost think he's non-existent. इंडिया स्टाफ एरिया में ही है. नहीं है मेरा मतलब. ये शायद यहाँ पे.
When I told them I was good with computers, I didn't think they'd trust me with the entire clinic. नहीं पर्सुएशन मेरे पास उसका काफी है. Whatever you do, don't unplug anything. You do, and I'll make sure you find out one of these hospitals. You know I went to chef school? Between you and me, this place sees some weird cases. Gross ones, too. ओ यहाँ पे भी एक लॉकर है भाई. यहाँ पे भी नहीं है कुछ भी. This place is a far cry from Kiya City. That's for sure. Running this facility is a challenge, even when there isn't an outbreak of Great. VIP wing requires key. डिजिपिक बहुत है मेरे पास. क्यों नहीं मिल रहा मुझे कहीं पे? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए मुझे. मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म चाहिए मेरे पास, क्योंकि सूट है नहीं कोई. थोड़ा सेव कर दो. You lost? 'Cause you don't look like you belong here. ओके, ये करता हूँ. और क्या कर सकता हूँ? ओके, ये और ये ठीक है. अनलॉक 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 अनलॉक. We cannot just break it open. नॉविस फिर से. ये हुआ और ये फिर इससे ये. ये हुआ ना. स्टॉप करते हैं. हिडन हूं ना. यार यहाँ पे भी क्यों नहीं मिल रहा मुझे कोई? सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म क्यों नहीं मिल रहा मुझे कोई कहीं भी? एडवांस्ड ठीक है. ओके, शुरू करते हैं. 1 2 3 हो गया. ना 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 ये ओके ठीक है. ये और ये और ये. That's it. Not what I need. मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म चाहिए.
मेरे पास ऑलरेडी है क्या? ये नेविगेटर स्पेस सूट है। वेल, मुझे कहीं नहीं मिल रहा। इससे क्या हो गया? कहीं नहीं मिल रहा है तो सेव करो अभी। फिर एड में जाओ। ये पर्सुएशन का चाहिए मुझे। बैंडेजेस, बैटल सिम। हाँ, पर्सुएशन का था है या मेरे पास काफी। ओके, चंद्रपोर्ट दोनों सेम ही है। ठीक है। Looks like you've got some fines to clear up. Shit. Stolen items मुझे कोई आइडिया नहीं है। That's fine. Just make sure you take care of this soon, and don't get yourself in any more trouble. Okay. Looks like you've got some fines to clear up. Shit. That's fine. Shit. कितने स्टोलन आइटम्स हैं मेरे पास? और क्या क्या है? पहली बात वो बैंडेजेस है एक ही। कपड़ा गोरी क्या है? चलता है। हार्ट प्लस एक ही है ना, बस ये है प्लस। ठीक है, वो भी चलता है। यो अंकित भाई, कैसे हो? स्ट्रीम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपने कोई शॉर्ट या वीडियो अपलोड नहीं किया काफी समय से। एक मेड पैक चलता है, ये भी चलता है। ठीक है, ये पूरा वीक मैंने ऑफ लिया है ये काम से, स्टारफील्ड खेलने के लिए, इसलिए स्ट्रीम कर रहा हूँ। अगले हफ्ते से वापस नॉर्मल वीकेंड ही होगा सिर्फ। चलो फाइन पे कर देता हूँ। Think about trying anything. Good. I'll take any stolen property or contraband you might be carrying, and we'll be done here. No loitering. I've got my eye on you. Shit. लोड करो। आपका कैसे चल रहा है अंकित भाई? रेमनेंट कैसे चल रहा है? एक्सेस इसकी नहीं ना। सूट और सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म ढूंढना होगा। नहीं, ये जरूरत नहीं है। मजा आ रहा है आपको ये रिटर्नल रेमनेंट 2 के साथ? Warning. This unit is not suited for addressing mental health. ओह, ये रहा लॉकर एक और भी। यार इतने लॉकर मिल रहे हैं पर एक में भी मुझे सिक्योरिटी गार्ड का वो नहीं मिल रहा है। स्टोन जिसमें वो छोटे से बल्ब के साथ रहते हैं सिर पे या फिर पीछे, वो वाला क्या? ये पूरे स्टोन के रहते हैं, बस एक वाइट कुछ क्यूब रहता है। हाँ, उसका बॉस इंटरेस्टिंग है, उस एरिया का। मुश्किल नहीं है वो।
बॉस मुश्किल नहीं है पर इंटरेस्टिंग है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा पर बॉस में, मैं इतना बोलूँगा। Wear a suit of security guard uniform. Need to make sure those files are backed up. Break room, break room. Mind your step. Floors in here can be a bit slick at times. Don't ask why. VIP wing, bathroom. Everything good? We're here to help. Shit यार, इधर कहीं है क्या? We should consider not staying long. Or breathing deeply. और बताओ अंकित भाई, आपका कैसे चल रहा है बाकी सब कुछ? काफी बिजी हो लग रहा है। वीडियो कोई अपलोड हुआ नहीं है आपका काफी समय से। वो मेस टाइप में फेज है, बिग स्टोन क्यूब्स फ्लिप होते हैं, इस सबकी लाइट तोड़नी होती है लास्ट वाली पर। हाँ वही बॉस है ना जो मैं बोल रहा था, हाँ लाइट तोड़ने वाला वही बॉस है। मैं भी एक्चुअली थोड़ा ब्रेक लेने वाला हूँ, एक बार स्टारफील्ड पूरा कर दूँ उसके बाद ब्रेक लेने वाला हूँ ये स्ट्रीमिंग से, और एक बार ये करंट फाइनल फैंटेसी 16 के सारे अपलोड कर दूँ। अपलोडिंग से भी थोड़ा ब्रेक लूँगा, मैं थोड़ा लेजी होने का मन कर रहा है, बार बार वीडियो अपलोड एडिट करने का मेरा भी मन नहीं कर रहा है अभी करंटली। फाइनल फैंटेसी 16 का बस फाइनल बॉस जो है उसे एडिट करना है और फिर फाइनल फैंटेसी का पूरा एडिट खत्म हो जाएगा। You're out there a lot, right? In space? Just do us all a favor and never turn into one of those spacers. सही में यार। हाँ वही, पर मेरा सैटरडे संडे बस स्ट्रीम करता हूँ ना, तो फिर मंडे से लेके फ्राइडे तक जब मन करता है मैं ऑफिस से आने के बाद वीडियो एडिट करता हूँ। शॉर्ट्स तो जब वीडियो एडिट करता हूँ उसी समय क्या बोलते हैं, मैं शॉर्ट्स को भी एक्सपोर्ट कर देता हूँ वीडियो एडिटिंग के समय। और अगर लगा कोई शॉर्ट्स में अच्छा सा डाल सकता हूँ तो यूजुअली सुबह अपलोड करने से पहले, वो शेड्यूल करने से पहले वो छोटा मोटा एडिट कर देता हूँ। जैसे आज का जो मैं अपलोड होने वाला है 2 बजे, उसका मैंने सुबह थोड़ा छोटा मोटा एडिट कर दिया। माफ, कुछ भी नहीं हुआ स्ट्रीम को। मैं थोड़ा बस एक वॉक थ्रू ढूंढ रहा हूँ। मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड, मुझे अभी करंटली एक सूट या सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म चाहिए, वो कहीं पे मिल रहा नहीं है मुझे। वो पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे मिलेगा। मेरा कोई वर्क एथिक्स उतना ज़्यादा है नहीं। मैं ब्रेक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं क्या बोलते हैं, टायर नहीं, बाबा करने, ये वीडियो एडिट करने से बोर हो गया हूँ थोड़ा बहुत, तो ब्रेक लेना चाहता हूँ फाइनल फैंटेसी 16 के बाद।
और प्लस वो भी है कि मेरे बहुत ज़्यादा गेम्स का भी बैकलॉग हो गया है। मेरे पास करंटली क्या बोलते हैं रेजिडेंट इवल 2 है जो मुझे एडिट करने के लिए, एलन वेक 2 है एडिट करने के लिए, कंट्रोल है एडिट करने के लिए, और करंटली ये स्टारफील्ड भी खेल रहा हूँ, उसका भी एडिट करने का है। और इस स्टारफील्ड का ऑलरेडी कुछ लगभग 30 घंटे का वीडियो है मेरे पास एडिट करने के लिए। तो थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ मैं अपलोड से भी और स्ट्रीमिंग से भी, पर वो भी है बहुत ज़्यादा गेम्स भी है जो मैं खेलना चाहता हूँ। या आर्मर्ड कोर 6 खेलना चाहता हूँ, स्पाइडरमैन 2 आने वाला वो खेलना चाहता हूँ, एलन वेक 2 आने वाला वो खेलना चाहता हूँ। इतने सारे गेम्स भी हैं जो खेलना चाहता हूँ मैं सही में। तो वही है एलन वेक कंट्रोल। और एक और गेम भूल ही गया मैं, तो ये डीएलसी जो है ना होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, उसका डीएलसी भी है जो मैंने अब तक एडिट नहीं किया। तो बहुत ज़्यादा गेम्स है एडिट करने के लिए मेरे पास। और मैं वापस एक दिन में 2 वीडियो वाले क्या बोलते हैं शेड्यूल में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता, वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था एक दिन में 2। एक दिन में एक एकदम सही है। दो HDDs आराम से। मुझे रिसेंटली एक्चुअली एक नया HDD खरीदना पड़ा। मैंने खरीदा, अमेजोन से आ भी गया, फिर जाके मालूम पड़ा मैंने खरीदा वो HDD मैक के लिए, पीसी के लिए नहीं। तो मुझे पूरा का पूरा वो क्या बोलते हैं ये कुछ डिस्क पार्ट करके कुछ होता है, उस पर जाके पूरा क्लीन करना पड़ा उसे, और फिर उसे फॉर्मेट करना पड़ा ताकि वो पीसी में मैं इस्तेमाल कर सकूं। वेल मैंने थोड़ा गलती कर दी है। Just by breathing the air in here, you are being exposed to a मुझे नियॉन सिटी में ही जाना था पहले। I find the interior of this ship comforting. काफी रिकॉर्ड किया है। जो भी गेम खेलता हूँ उसको रिकॉर्ड करता हूँ। कहाँ पे था ये जो मैं, मुझे याद नहीं यार, ये नियॉन सिटी कहाँ पे है? वेसल, एक मिनट रुकना। कंप्लीटेड। लेगेसी फॉर्ज, जॉब गॉन रॉन्ग, नहीं। यार ये वीडियो शेड्यूल करूँ या उसी समय करूँ उसका कोई इश्यू नहीं होगा। मुझे वैसे भी सुबह समय नहीं मिलता है जब मैं काम के लिए जाता हूँ, स्पेशली ये काम करता हूँ जिस दिन मुझे सुबह समय नहीं मिलता, क्योंकि ये थंबनेल में काफ़ी समय लग सकता है। और मैं सुबह 7 बजे तक जिम पहुँच जाता हूँ। 7 बजे से लेके 8:45 तक कुछ क्या बोलते हैं 8:30 8:45 तक जिम करता हूँ, और फिर वापस आने तक 9 बज जाते हैं। फिर 9:15 से नहाता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, और फिर ये शॉर्ट्स का अपलोड करना होता है। उसका जो अपलोड कर रहा हूँ उस पर थोड़ा एडिट्स करना चाहता हूँ तो उसमें भी समय लग जाता है। तो ये सब करने में 10:30 हो जाता है, और 10:30 फिर मुझे काम करने के लिए निकलना पड़ता है। तो सुबह समय ही नहीं मिलता है। अपलोड करता हूँ तो फिर ऑफिस से आने के बाद ही करता हूँ अपलोड। वो अपलोड में कोई इश्यू नहीं है, ना ही क्या बोलते वो एडिटिंग में। मैं वो बस ये है कि मैं थोड़ा बोर हो गया हूँ एडिट करके और थोड़ा आराम लेना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं फाइनल फैंटेसी 16 के बाद ब्रेक ले रहा हूँ थोड़ा। वॉय अल्फा, हाँ ठीक है ठीक है।
ओके फाइनली मालूम पड़ गया, याद आ गया कहाँ पे है ऑनलाइन चेक करने के बाद। अल्फा सेंटारी ये रहा, ओलंपस ये रहा, ये यहाँ पे नियॉन कोर सेट कोर्स। वन के सही में काफी ज्यादा अपलोड कर दिया मैंने। और स्टार्ट में तो 2 करता था। This is free star space. Please hold your current speed and heading while we scan you for contraband. और सही बोलो तो अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहा होता पूरे के पूरे हफ्ते Have a good time in Neon. तो शायद तब भी फिर 2 वीडियोस पर डे में शायद हैंडल कर पाता, शायद हैंडल कर पाता। पर ये 3 हफ्ते में 3 दिन ऑफिस जाता हूँ तो उसके साथ टाइम नहीं मिलता, और जिम भी शुरू कर दिया उसके वजह से भी टाइम नहीं मिलता उतना। ओके यहाँ पर ही कहीं पे एक खरीदने का है सूट वो सब। I heard the shortages over Reliant Medical. Not great. Doc Manning better get his act together before the place shuts down. Legrand Liquors, हाँ? चलो मेरे बारे में बहुत हो गया, आपका नेक्स्ट कब हो वीडियो कब करने का इरादा है? ट्रेड अथॉरिटी भी है यहाँ पे, माइनिंग लीग, आउटफिटर्स ये रहा। You wanna head to Euphorica after work tonight? I have plenty of supplies for your next expedition in stock. Welcome to Sighardt's Outfitters. Everything you need to explore the settled systems. If I don't have it, you don't need it. Great. I'll bring the blend, you bring the chunks. The question should really be, what don't we sell? We carry a wide assortment of equipment perfectly suitable for stellar exploration and extraplanetary excursions. Best selection in Neon. I can promise you, I'm not just using hyperbole to get your business. I've spent years perfecting my business by polling customers, measuring sales, and carefully adjusting my inventory to cater to just about everyone. So take your time, look around, ask me questions. You won't be disappointed. Thank you for noticing. I have a lot of overhead in this place, and just between you and me, I am up to my eyeballs in debt. This is a prime spot right next to the spaceport terminal. Definitely चलेगा अंकित भाई, मैं तो पूछने वाला था, रेमनेंट का नहीं है क्या आपके पास? रेमनेंट अच्छा गेम भी है। Oh yes, absolutely. It can be off-putting, I know. उसके डाल दो थोड़े I picked up the funny habit moments. from my mother. She was an extraordinary woman. Made friends instantly wherever she traveled. Wise as well. If she was still alive, she would have told me to move my shop and cease paying these exorbitant fees. Sure, and going in, I expected it to be expensive. तो फिर इसे शॉर्ट्स डालोगे या पूरा फनी वीडियो प्रॉपर बनाओगे उसके लिए? My business all day. You're here to shop. So why don't you help out a poor shopkeeper like myself and buy something? I'm sure we can make a deal. चलो देखते हैं। apparel, poncho, chunk caps, power suit, neon business wear. नहीं, एक ये है बिजनेस वेयर जो मैं रख सकता हूँ। अपेरेंटली इससे भी ज्यादा अच्छा कहीं पे होगा।
Reliant Medical. Neon Fisheries. Trade Authority. 2 मिनट देना यार, कहाँ पे बोला था? Make your way to the lobby and visit Aito Suzuki store. ये लॉबी में जाना और वहाँ पे आइटो सुजुकी स्टोर है अपैरेंटली। हाँ, ये वही है कि क्या बोलते हैं, अलग अलग जो मेन शहर हैं इसमें स्टारफील्ड में, उसके डिफरेंट एस्थेटिक्स हैं। जैसे ये वाला तो साइबर पंक है, फिर एक और है न्यू एटलांटिस जो रेट्रो फ्यूचरिस्टिक की तरह होगा, और फिर एक और है अकीला जो वाइल्ड वेस्ट की तरह है। आइटो सुजुकी यहाँ पर ही है। This is the only shop in town where you'll find neuroamps like these. Okay. Tranquility, Oberon. और फिर एक और भी है इसके अलावा, एक और शहर जो मैं शायद अब तक विजिट नहीं किया हूं। आइटो सुजुकी कहाँ है यार? 2 मिनट देना। Make your way to the lobby and visit Aito Suzuki store. Aito Suzuki store, Starfield. Aito Suzuki. Okay, यही है। Aito Suzuki store apparently यही है, ये बंदा। हाँ। Welcome to the Ryujin Industries product store. Looking for a neuroamp? I'm always stocked up on neuroamps. चलो apparel और एक intimidation chance, ना sleek suit +5 persuasion chance. I mean already एक मिला हुआ है, ये वाला अच्छा है। चलो See you next time. Well, वैसे ये एक और गेम है। आपको कोई प्लान है ये स्टारफील्ड खेलने का, या फिर ये आपकी तरह आप नहीं, स्टारफील्ड तो सिंगल प्लेयर है, आप ज़्यादा भूल गए कि आप ज़्यादा वो मल्टीप्लेयर प्रीफर करते हो। और भाई स्ट्रीम में स्वागत है। कल उसे मार पाए क्या, वो बॉस जो था, कोरल बॉस? साइबर पंक की एरिया है ना, इसलिए शायद पसंद आ रहा होगा। To be back in our own नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेट। इसको नहीं, इन सेटलमेंट बिल्कुल नहीं। और फिर अपैरल में नियॉन बिजनेस सूट या फिर ये कॉर्पो स्लीक सूट। फिर हमें जाना है यहाँ पे वैरायटी भाई, वापस स्वागत है। ओह, इतनी जल्दी हो गया, कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं। याद रखना होगा अगली बार। ओह शिट, ओह बार बच गया।
ऐसे वॉल्टर भाई सही कहूँ तो मुझे लगा ऐसा कि आप कल खत्म कर दोगे उस बॉस को। कई बार उसके मारने के बहुत पास आए थे जब मैं देखा था, तो सही में मुझे लगा था कि आपका हो जाएगा कल तक। Retrieve the security card. Okay, save करो। You sure you belong here? Hmm. Looks like you've got some fines to clear up. That's fine. Just make sure you take care of this soon, and don't get... यार, इससे कुछ नहीं मिल रहा है। और कोई सिक्योरिटी है क्या? किसी और सिक्योरिटी वाले से पूछता हूँ। Saw your ship come in. Nice ride. Looks like you've got some fines to clear up. That's fine. सही में सारे के सारे ऐसे ही बोलते जाएंगे क्या? Ever wonder how the Crimson Fleet seems to be everywhere? मालूम है क्या? कार्गो होल्ड में जाओ। ऑल या जा जा वैरायटी भाई, आज वैसे आप कब शुरू कर रहे हो वो स्ट्रीम उसका ब्लास्फेमस 2 का? Because they have little outposts everywhere. So many facilities abandoned after the colony. चलो अब देखते हैं वैसे। Looks like you've got some. Any stolen property or Okay. We should be getting a hazard pay working in a place like this. Hmm? You had a chance to talk to Dr. Cassidy? I know your type. Really fun guy. Freewheeling. कोई वेपन भी नहीं करना है क्या? Equip. Face ace. भाई इतने जल्दी तो खत्म नहीं हो सकता वैरायटी भाई ब्लास्फेमस 2। और हाँ, काफी उतना ऑप्टिमाइज नहीं है सही में। मैं 4090 के साथ खेल रहा हूँ 7950X, और फिर भी बीच बीच में मुझे ये फ्रेम रेट ड्रॉप्स दिख रहे हैं। भैया वाला Must be nice. मैं इससे बात करता हूँ, शायद इससे मांग पड़ेगा। How are you doing? See you around. भैया समझ में नहीं आ रहा ये कैसे करना है। ये थोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे ये क्या बोलते हैं, फ्रेम रेट ड्रॉप्स हो रहे हैं जब मैं ऐसे हिल रहा हूं तो। Can I help you? Finally. I hate to disappoint you, but I'm not big on doing favors for people I don't know. I'm not sure what kind of emergency would require me to hand over a security key card to a citizen. I thought I made myself clear. I'm not giving you my card. Okay. What did I do to deserve this? Please. Maybe Yes. I can make an exception. Fine. Key's yours. Just remember to bring it back, or I'm reporting you. नहीं मिलेगा वापस। अंकित भाई, आपके स्पेक्स क्या हैं आपके कंप्यूटर के? Actually, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सीधे बस ये करो। कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? ये है ना?
आपका और वॉल्ट अंडर भाई का स्पेक शायद सेम है। वॉल्ट अंडर भाई आपका क्या थे स्पेक्स पीसी के? आपका भी 3070 लिया था या 4070 लिया था आपने? तुमने देना, कुछ खा रहा हूँ। ओके, लगता है मैं गलत था। आई मीन 3070 मेरे हिसाब से मीडियम चल जाना चाहिए। एक्चुअल में ये हार्डवेयर अनबॉक्स जो है उन्होंने शायद या तो 3070 के साथ या 4070 के साथ ये स्टारफील्ड ग्राफिक ऑप्टिमाइजेशन का एक वीडियो निकाला हुआ है, एक बार चेक कर लेना उनका। अनबॉक्स्ड हार्डवेयर उन्होंने शायद 3070 का किया था या फिर 4070, मुझे याद नहीं आ रहा उन दोनों में से कौन सा था। वो चेक कर सकते हैं, वो चेक कर सकते हो आप अंकित भाई। ये प्रॉपर स्मूथ गेम प्ले के लिए कि कौन सा डालना चाहते हो अगर स्टारफील्ड खेलना चाहते हो तो। चलो चलते हैं वॉली की तरफ। Yes. Will we be taking off immediately, or are Welcome to the Freestar Collective. Please maintain your current course while we scan your ship. That's all we need. Enjoy Neon. वो 3070 के साथ ही उन्होंने बनाया था या फिर उनका 4070 था? क्योंकि 4070 मीडियम पे सिर्फ 48 FPS, वो फिर भाई पता नहीं क्यों टॉड हावर्ड ने कहा कि उन्होंने ऑप्टिमाइज किया है। अगर 4070 में से 48 FPS आ रहा है मीडियम, वो भी आपको साइबरपंक बहुत पसंद है शायद, इसलिए ये एरिया सेक्सी लग रहा है वॉल्टन भाई। As technicians, we handle prep and post-op work. Beginnings and ends, as it were. ठीक है, चलो इससे बात करते हैं। Hey there. Got that key card for me? Now we're talking. Not bad for a novice. I think you're ready to kick things up a notch, and your timing couldn't be better. Good. It's time for a change of pace. This next assignment requires a bit more discretion for 2 reasons. First, you'll be dealing with high-level executives, and second, you'll be in the Astra Lounge here in Neon. I suspect a great many things could occur in the Astra Lounge without anyone taking notice. Don't mention that out here. Follow me. If you haven't already heard the name Benjamin Bayou, you'd better get familiar. Starfield से definitely ज़्यादा optimized है वो। Has ties to anything significant here, including Ryujin. The trade tower is his baby. And the Astra Lounge is the heart and soul. You do anything to scar that and make a scene, I guarantee it'll come back to haunt us. अब वो भी है कि क्या बोलते हैं, साइबरपंक जब बना रहे थे तो वो एनवीडिया के साथ बहुत ज्यादा उन्होंने कोलैबोरेट किया पूरा सब कुछ करने के लिए, तो इसलिए ज्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज्ड है वो। Infinity Ltd is one of our aspiring competitors. They have मैं products वो in नहीं जानता several उन्होंने similar AMD के साथ भी fields, किया था कि नहीं। Ships and neuroamps being the exception.
Quantum Synergies specializes in ship operating software. क्योंकि Nvidia जब भी कोई नया क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर निकालती है DLSS वो सब या कुछ भी हो Cyberpunk का एग्जांपल लेती है. Infinity must be looking to get into the ship business, and we'd like to delay that if we can. That's what we're hoping for. You'll be speaking with Quantum Synergy's executive director Zola Adisa and their financial manager Arthur Cruz. I'll be giving you a dossier on both. I strongly suggest you read them for talking points. I suppose I can give you a brief rundown. We'll start with Zola. Zola is a born and bred executive, runs in the family, so she's highly accustomed to an upper-class lifestyle. AMD at least एक cycle She's a पीछे narcissist. Nvidia She's से. also obsessed with public perception, both of her and Quantum Synergies. She wants to be associated with the latest and greatest, so she's drawn to innovation and quality. She's considered it, but she's next in line to be CEO over at Quantum. If she came here, she'd have to deal with stiff competition. As for her talking points, the key things to remember are Infinity is the cheap version of Ryujin. They're a follower, not a leader, and they lack any sense of clear vision. Infinity has struggled with leadership and turnover for a long time now. Lucas Drexler is probably the 5th CEO they've had in the past few years. Plus, it's hard to keep good employees when much better corporations who will pay more are out there. They've launched several, but none survive long. Nothing that would be as big as neuroamps or grav drives. That's why they've taken to just following whatever trends companies like Ryujin set. If they can't make money off ingenuity, they can certainly sell someone a cheaper version of a more expensive product they may want. Infinity Ltd's strategy to make money is to cut cost on quality. You can compare any one of our products to theirs and see it almost instantly. Low-grade synthetics, flimsy thin materials, high energy usage, they issue at least 1 or 2 recalls a year. Just remember, you can refer to the dossier at any time as a refresher. Now, on to Arthur Cruz. Arthur is a self-made man, and he prides himself on that. Well, दोष सही है. DLSS 3 पे हैं, जबकि AMD के हम पहले वर्जन में सॉफ्टवेयर के. As Quantum Synergy's financial manager, he's all about driving profit with as little risk as possible. He makes decisions based on facts and heavily researched trends. It sounds like the two of you could really hit it off. Arthur's a great talker, but even the best can lose an audience when finance is the topic. Talking points for Arthur are aimed at steering him toward Ryujin over Infinity Ltd. Ryujin's profits are 25.7% higher than Infinity's, even with a superior quality product. Infinity's profits are fabricated. They're one audit away from ruin. We have a history of being financially secure that's never wavered, and we have the legal and marketing teams to handle anything that might threaten that. Quantum Synergies is the top name in ship OS. Their reputation has allowed them to keep the best engineers on their payroll. We can't deny that working with them would be beneficial for us, and Arthur is our best bet in making that happen. Besides, an open collaboration gives us easier access to information we'd otherwise have to find a more clever means of discovering. We keep an extremely close eye on our competition. इसमें बहुत Thanks to dialogues हैं. operatives like you, that information is almost always at our disposal. Sounds like you're ready then. I'd still highly recommend reading the dossiers, though. Sometimes bullet-pointed statements can stick out in minds easier than conversation. Exactly. Those lines are most likely to sway Zola and Arthur away from Infinity, not to mention give them a gentle nudge in our direction. The Infinity Ltd rep is Nina Hart. I'll also be giving you an altered version of her presentation to swap out with the original. We've changed several figures, just enough to cause sufficient confusion throughout their meeting. If it's not on her person, it will be in the मुझे ये street पसंद है ऐसे reserve. dialogues सही बोलूँ Streets तो. are patrolled. ये world She building believes it's especially. secure.
If you can't manage to get her room key or deal with the door itself, try Boone Morgan, the manager. Boone appreciates credits, if you know what I mean. We got lucky on that one. Nina was making some last-minute changes to it at her own home and happened to save it to her personal data storage. Of course, we were able to access it, so we fabricated our own with new figures and put it on an Infinity LTD slate. Assuming she's using an Infinity LTD slate is a bit of a gamble, but one we're willing to take. Whenever executives are faced with numbers that don't properly match up, any faith they may have had will falter. Finally, I recommend dressing appropriately, so I've taken the liberty of having a suit made for you. चलो अंकित भाई, मेरा भी लंच का समय हो रहा है. On this one. I don't आप want मजे any करो. SSNN broadcasts about murder in the Astral Lounge. Got it? Business executives aren't going to take advice from just anyone. Show up looking like an Ebside street rat काश मैं भी काम को भूल जाता, and you're lucky भूल if I'll पाता. even acknowledge you. अब पैसे चाहिए होते हैं. ये सारे गेम्स खेलने के लिए पैसे, पीसी बनाने के लिए पैसे, अपग्रेड करने के लिए पैसे, तो काम को भूल नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली. चलो बाय अंकित भाई. If you think you can do better, you're welcome to it. I suppose I can even provide you with a small allowance. Just keep in mind, business attire is preferred. Club attire would be second to help blend in. I bet you are. Just remember to keep a low profile. Don't let the Astral Lounge distract you too much. Read the dossiers. ठीक है. Influence Autocross against Infinity Ltd. Influence Zola Adisa against Infinity Ltd. ठीक है. तो फिर अभी नीचे चलते हैं. लॉबी. देव. और स्ट्रीम को असल में मैं यहाँ पर ही बंद कर रहा हूँ. ये मेरे लंच का समय हो गया. 2:20 हो गया. मैंने लंच नहीं खाया. लंच बन रहा है मेरा. हो गया है लगभग. तो फिर अंकित भाई, वॉल्ट हंटर भाई, वैरायटी भाई, और फिर उनके अलावा जो कोई भी स्ट्रीम में जुड़ा है आज, स्ट्रीम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आपसे लंच के बाद मिलता हूँ.